icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋಕುಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಳ್ವಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿಲನ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಕುಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ as well as Alva Super Kings, please come in front of the stage for the toss procedure. Match is now starting right now. Thank you. So Gokul Tigers have won the toss and won the decision. They will take this. We are wait and see the first qualifier match of this prestigious cricket tournament, KPL Kadri Premier League season 11 2026 is now coming up live exclusively right in front of you within just a short while. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತೆ ಪಂದ್ಯ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವಂತೆ. Right, Gokul Tigers have won the toss. They elected to field first in the first qualifier match.
between Gokul Tigers versus Alva Super Kings. Gokul Tigers, after won the toss, they elected to field first, and because of that, their fielders have to spread it out on the field. And we are just waiting for the first match of the qualifier match number 1 of this prestigious cricket tournament, KPL Kadri Premier League Season 11 2026. And the bowler starts the fresh proceedings. So the first ball of the qualifier match number 1 is now coming up right arm over the wicket. The bowler bowls outside the off stump in the air for a while and brilliantly taken just outside the 20-yard circle by the fielder. This is an outstanding catch taken by the fielder with one hand standing inside the 20-yard circle. He's gone outside the 20-yard circle, but he took the catch successfully with one hand. Have a look at this at the replay. This time lecketed it away. Just wanted to play that on the onside ball, going on to the offside, and fantastically held by the fielder with one hand. And this is an outstanding catch taken by the extra cover fielder. And have a look at the effort of the fielder. This is an outstanding effort. With one hand, with right hand, he just took the catch, and the first wicket gone. The batsman departs. So Raghudha man dismissed. The first wicket lost for Alva Super Kings, and now they are not won in the first over. We are just waiting for the number 3 batsman. And the batsman is now comes out to the middle. Santosh, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. Santosh, the new batsman, comes out to the middle. So they lost their first wicket in the very first delivery of the innings. The pressure is now just shown on the batsmen of Alva Super Kings in this situation. And the bowler comes this time right arm over the wicket. Chetan, the bowler, bowls right arm over the wicket to the right hand batsman. Just want to play a reverse shot, not succeeded. The ball, he bowled 2 for outside the off stump, and a wide declared by umpire. And with that wide run, the scoreboard, the runs are going to begin for Alva Super Kings. It's 1 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. And striker, the lefty batsman, is now going to face 2 for the loss of 1 wicket. Manish is now going to face the bowling of Chetan. And strength of fitness adjustments is going on there. First power play of their innings is now progressing here. And Chetan, once again, here he comes right arm over the wicket. Just want to sweep that one, not connected that one properly. The bowler quickly after it, but won't go with a single, and with that single run, the scoreboard moving up to 3 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. 2 right delivery ball by the bowler Chetan in this over. And third time in this over, here is now coming up right arm over the wicket to the right-handed batsman Santosh. Alva Super Kings lost their first wicket in the very first delivery in the face of Raghu. This time driven that one in the air just wide of the extra cover fielder this time, and he got a single. The stroke checked at the last moment by the batsman, but luckily for the batsman, it went just wide of the extra cover fielder, and because of that, he just got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 4 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Again, Chetan bowls to Manish outside the off stump, just gone for a mighty one, not succeeded, and collected by the mid-wicket fielder, and the batsman pursued for the single, and with that single run, the scoreboard moving up to 5 on the board. Good piece of bowling performance continuing here from Chetan in this over. He bowled 4 deliveries, conceded 5 runs. Santosh is now going to face. This time just wanted to play a reverse shot, not succeeded. Got for a quick single and get it comfortably at last. That wasn't a brisk single by batsman, and with that single run in the face of luck by the scoreboard moving up to 6 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. So the ball left in this over from Chetan. And this batsman tried to put a partnership in this situation after they lost their first wicket in the very first over of their innings in the face of Raghu, caught brilliantly by the fielder at the extra cover of the bowling of Chetan. This time just gone for a big one, missing the line completely.
Fantastic delivery to end the fantastic over from Chetan. First over completed. After first over, Alva Super Kings after losing the toss and asking to bat first against Gokul Tigers. They made a steady start. In fact, it's 6 for 1 after first over. After losing the toss and put it to bat by Gokul Tigers. Next start for Alva Super Kings. It's 6 for the loss of 1 wicket after completion of first over. The bowler starting a fresh over. Here, Ritesh starts a fresh over from the commentator box, and first ball of his fresh over is now coming up. Santosh is now going to face the bowling of Ritesh. Now Santosh back into the player's record to change his bat. He's got a crack on his bat, and because of that he's going towards to the player's record to changing his bat, and the match is now stopped for a while. This is the qualifier match number 1 of this prestigious cricket tournament, KPL Kadri Premier League Season 11 2026 is now progressing here, which is proudly organized by Kadri Cricketers Club, registered Kadri Bangalore. 7 franchise teams are participating in this prestigious cricket tournament, and 4 teams already qualify for the playoff round, and the first qualifier match is now progressing here. So next one from the bowler comes reverse shot, delicately played down to the hands of gully fielder and gone through for a quick single, and with that single run the scoreboard moving up to 7 for the loss of 1 wicket at the start of this second over, in fact. And Alva Super Kings 7 for 1 at the start of the second over. Ritesh once again comes bowling to the left-handed batsman. Manish is now going to face the bowling of Ritesh, right arm. This time just wanted to play reverse shot, not succeeded. The ball missing 2 for Sathi, off stump, wide declared by umpire. With that wide run, the scoreboard moving up to 8 on the board for losing 1 wicket in the over number second in progress. Now Ritesh once again comes to left-handed batsman Manish. Here he bowls. This time just wanted to cut that one, missing the line completely. Good one, just change of pace by the bowler. Bowled a slower delivery comparing to the previous one, and the ball went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. Again Ritesh comes, right arm round the wicket, bowling to the left-handed batsman. Down the track, after that one, this time chance for the fielder. I think it fell short of a fielder at long on. He collected the ball after first bounce, and I think he stopped brilliantly by the fence, just inside the fence by the fielder. And the batsman got a couple of runs for that stroke. Brilliant work made by the fielder who stood at long on. And 2 runs added to the total. With that couple runs, the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 1 wicket. And now it's going to be a third umpire to check whether it's a boundary or not. So have a look at this in the replay. And third umpire have to check and finalize that there was in a boundary or not. Just we have to wait for the third umpire decision. After this match, eliminator match will be played between Bandari Challengers versus Mohan Thunders. And because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage for the signature procedure. The eliminator match will be played right after this match. So we are just waiting for the third umpire decision. So for a fantastic cricket tournament organized by Kadri Cricketers Club, registered Kadri Bangalore, with the celebration of their 11th year, they are organizing this fantastic cricket tournament in the name of KPL Kadri Premier League Season 11 2026. And the qualifier match number 1 of this prestigious cricket tournament is now progressing here.
Just we have to wait for the third umpire decision. It's perfectly saved, and a couple of runs added to the total, and with a couple of runs the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Good piece of bowling performance continuing here from Ritesh. He conceded just 4 runs in the first 3 deliveries of his first over. And a fourth time here he comes. Right arm round the wicket to the left-handed batsman. Manish is now going to face the bowling of Ritesh. Here he comes. Right arm round the wicket to the left-handed batsman. Manish is now going to face the bowling of Ritesh. Here he bowls. This time lofted straight into the hands of mid-fielder. Not quite getting that one right from the middle of the bat, and he just paid the penalty for that. Placement was absolutely wrong, and he just paid the penalty. And the man departs is Manish. He hit that one pretty hard, but the placement was too wrong. And have a look at this in the replay. And the ball straight went into the hands of mid-fielder. He took the catch just inside the 20-yard circle to depart the batsman called Manish. Second wicket gone. Alva Super Kings looking in trouble a little bit for the first time in this match with this dismissal from Manish. It's 10 for 2. We're just waiting for the number 4 batsman. So both openers are now already back into the pavilion. Raghu, the first man to go, caught brilliantly by the extra cover fielder of the bowling of Chetan. After that, in the previous delivery, Manish departed, caught by mid-fielder of the bowling of Ritesh for 4. Raghu out for a golden duck, and Manish out for 4 of 60 deliveries he scored. New batsman, Mitesh is now comes out to the middle, and he's now going towards to the striker, and 2 balls left in overall calculation in this over. Ritesh successful over so far, progressing here so far from him, and now here he bowling to the right-handed batsman, left-handed batsman in fact, Mitesh. One more left-handed batsman comes out to the middle for ASK. Again Ritesh bowls, this time swept it away fine delicately at the last moment, just waiting to the bounce of that ball. Turns it over on the corner for a single, and with that single run the scoreboard moving up to 11 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Still a ball left in this over. Ritesh this time bowling to Santosh, the experienced campaigner of the side, is now going to face Ritesh last time in this over. And here he comes. Right arm over the wicket. This time just wanted to work it around the outside. Not corrected that one properly. In comes the throw into the hands of wicketkeeper from the short fine leg fielder. But the batsman crossed over for the single quickly in the end in the face of leg by. So second over completed. 2 was gone. After 2 overs, still the equal battle is now on. Alva Super Kings man to score 12 runs on the board for losing both openers. For losing 2 wickets after completion of 2 overs against Gokul Tigers. After being losing the toss and put it bad by Gokul Tigers. Alva Super Kings 12 for 2 after completion of 2 overs in the qualifier match number 1 of this prestigious cricket tournament, KPL Kadri Premier League season-11 2026, which proudly organized by Kadri Cricketers Club, registered Kadri, Mangalore, in this beautiful Kadri cricket ground. Fantastic live coverage we are just watching here from Shine Sports. Bedra this time just wanted to play that one, not connected that one properly, appealing for leg before, no says about the ball missing just outside the leg stump. So Pratap the bowler started the fresh proceedings, and he bowled a leg cutter delivery. The ball stuck to his back leg, but it missing outside the leg stump at the last moment. 1 ball only bowled in this over. Pratap comes. Right arm over the wicket ball. This time just missing outside the leg stump. Just gone for a mighty, asking for wide, no says umpire. Because the ball missing not so far, too far outside the leg stump at the last point, even just wide of the leg stump. And right delivery again. Here he ball. This time lofted that one into the gap, and this time I think he finds the gap as well.
It's a boundary. Fantastic struck came from the bat of Santosh. Have a look at it in the replay. This is an absolutely fantastic struck. Got right behind the line of that ball. Lofted that one over the extra cover fielder's head. And it's gone over the fence after one bounce into hitting to the LED screen at deep extra cover. Fantastic struck came from the bat of Santosh. Again cuts that one. This time down to a gully area. Gone through for a quick single and get it comfortably at last. So welcome boundary added into the account of ASK from the bat of Santosh, and after that a single scored by Santosh, and with that single run the scoreboard moving up to 17 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Lefty batsman Mitesh is now going to face Pratap. Right arm over the wicket. Here the ball just a top edge and it's gone over the fence on the road. And this time 2 runs declared by umpire. The ball getting a stoppage at the last moment and went over the fine leg fence on the road for a couple. 19 for the loss of 2 wicket. Last ball remaining in this over. Pratap balls. Right arm round the wicket. This time just gone for a mighty, if not succeeded. Collected by wicket keeper behind this time. Dot ball to end the over. 7 runs came from this over. Pretty good one in Alva Super Kings point of view came in. 3 overs gone. After 3 overs, Alva Super Kings 19 for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs, and now just 3 overs left in overall calculation in their innings. Fantastic work doing by the cameraman and technician of Shine Sports. Fantastic live coverage we are just watching here. And a 4th over starts in their innings. चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त. गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुके हैं. 2 रनों का इशारा अंपायर द्वारा. विद अ ट्विस्टेड बैट गेंद को खेला था इस वक्त खूबसूरती के साथ. बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 2 रनों के लिए, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर. 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर. इनफैक्ट गेंदबाज चेतन गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त बोलना चाहा. शॉर्ट फाइन लेग पर बेहतर तरीके से गेंद को रोका गया, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 22 रनों पर. 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज चेतन दिस टाइम जस्ट गॉन फॉर अ माइटी, नॉट सक्सीडेड, और विकेट कीपर आगे क्यों कर गेंद को कलेक्ट करने में सफल. 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज चेतन फेंक चुके हैं, और अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर गेंद को मोड़ना चाहता, गेंद उनके पैरों पर टकराई. शॉर्ट पॉइंट पर जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. ये दोनों बल्लेबाज मितेश और संतोष पारी के भागदौड़ को संभाले हुए अपने स्कोर को, अपने टीम के एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए रिवर्स शॉट ऑफर किया था, लेकिन कुछ तक तेज गेंद थी. गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर और 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में. रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए ASK अल्वा सुपर किंग्स के लिए, और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज गोकुल टाइगर्स के. तो इस वक्त अंपायर गेंद को बदलते हुए और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज चेतन इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथ के बल्लेबाज मितेश के लिए तैयार. ये गेंद गुड वन, एब्सोल्युटली गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट. गेंद आसमान में उछाल लेते हुए और आखिरकार बल्लेबाज के साथ साथ विकेट के ऊपर इस गेंद को समझ नहीं पाए, और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक फील्ड ऑफ 1 रन का इजाफा हो चुका. 4 overs completed. And after 4 overs, still I must say the equal battle is now on. 25 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs. मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है इस वक्त संगठक ऑर्गेनाइजर्स मैदान के दाईं स्टेज है, वहां पर विराजमान होकर इस मैच का मुआयना करते हुए निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला का उन्होंने आयोजन किया है. फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ Kadri Cricketers Club registered Kadri Bangalore in the name of KPL Kadri Premier League Season 11 2026. और क्वालिफायर मैच नंबर 1 इस श्रृंखला का इस वक्त प्रगति पर. 5वां ओवर शुरू होता हुआ. 5th ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स. द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स. नागेंद्र गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. मितेश बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. हालांकि कुछ खास असर अब तक मितेश दिखा नहीं पाए. सिर्फ 3 रन अब तक बना चुके हैं. 6 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं, और गेंदबाज नागेंद्र ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था. इन्हें राउंड द विकेट. गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट गली पर. 1 रन का इजाफा हो चुका है.
लेग पाई के रूप में और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर शुरू हो चुका है और संतोष स्ट्राइक पर आ चुका है। जहां तक संतोष का सवाल है, एक बेहतर पारी वो अपनी टीम के लिए खेलते हुए 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। यह गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त, चूंकि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मितेश काफी आगे निकला है, लेकिन इन मौके पर सही तरीके से उन्हें वापिस भेजा स्ट्राइकर के बल्लेबाज संतोष ने। और जहां तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेगा। बेहतर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नागेंद्र अगली गेंद लेकर तैयार रहा। यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, फीडर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। यहां पर जी तोड़ कोशिश जरूर की थी, लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंचने में असफल। और इससे पहले कि दूसरे फीडर गेंद को बैकअप करते हुए लॉन्ग ऑफ पर गेंद को लौटाए इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। चिप कर दिया था इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑन फीडर के आगे और 2 रन बल्लेबाज संतोष प्राप्त करने में सफल। इज मूविंग अप टू 12 नाउ विद दैट कपल रन of 13 deliveries he faced, and the scoreboard is now moving up to 28 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. और नागेंद्र प्रीमियर लीग सीजन 15 अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई इस वक्त, gone to for a quick single, this could be he's gone this time, direct hit and a fantastic innings came to an end from Santosh, and a 3rd wicket lost for Alva Super Kings. It's 28 for 3. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 15 ಈ ಪುರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಲೀಸ್ಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರು ಯುವ ಸಂಗಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂದೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮೇರ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ಸಂಗಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂದೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರು ಮೇರೆಕ್ ಅಮೃತ್ ವಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರ್ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮೇರೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ಸಂಗಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶಾಲ್ ಮೇರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಧನರಾಜ್ ಮೇರ್ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ सुलमेलू धन्यवाद। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त उछाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में और गेंद इस वक्त वहां पर डिसअपीयर हो चुकी है। और जहां तक कहना पड़ेगा इस वक्त रनों का तो 6 रन इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर। This is an outstanding strike again from the bat of the left-handed batsman. Have a look at this in the replay. He hit that one pretty hard and just got the distance at last. Maximum for the batsman. Fantastic strike came from the bat of Mitesh. And with that 6, the scoreboard is now jumping up to 34 for the loss of 3 wicket. Much needed sixer added into the account of Alva Super Kings. और गेंद के लिए इस वक्त तलाश जारी है और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त मितेश के बल्ले से लगता है। और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंद का, तो एक गेंद इस ओवर में बाकी। नागेंद्र पहले 4 गेंद बेहतर फेंकने के बाद इस गेंद पर वो छक्का प्रदान कर चुके हैं और देखना है कि अपने ओवर की अंतिम गेंद पर वो किस तरह की गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया इस वक्त, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा। So 5th over has been came to an end. 5 overs gone, 35 for the loss of 3 wicket after completion of 5 overs. भव्य स्टेज पर गण्य अतिथि जिनको इस वक्त सम्मानित किया गया है, मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए कुछ बच्चे इस वक्त वहां पर खेलते हुए एक सुंदर सा नज़ारा मैदान के दाईं ओर जो भव्य स्टेज सजाया हुआ है वहां पर दिखाई देता हुआ। और जहां तक का सवाल है इस मैच का, तो 35 रन बन चुके हैं इस वक्त 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स, बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स इज सुजीत। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। Mitesh is now going to face the first ball of Sujit and the last over starts in the innings. First ball coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार मितेश के लिए ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतर विकेट कीपिंग, फैंटास्टिक वर्क में बाय विकेट कीपर प्रताप behind the stumps, and now umpire asking for the third umpire. Just wanted to loft that one on the onside area in a fraction of second, flicking the wicket very quickly by the wicket keeper. Have a look at this in the replay. और जब विकेट उखाड़े गए थे तब देखना है कि बल्लेबाज अपना फुट क्रीज पर अपना पैर क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं, ये देखने वाली बात है।
और यहाँ पर देखिए विकेट इस वक्त उखाड़े जा रहे हैं, काफी नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है। और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। तो इस वक्त स्टंपिंग के लिए तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है। तो जहां तक सवाल है इस वक्त द डिसीजन इज नाउ स्टिल पेंडिंग, और देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। This is match number 1, qualifier match number 1 of this prestigious cricket tournament is now progressing. Yes, Kadri Premier League season 11 2026. The battle is now progressing here between the Gokul Tigers versus Alwa Super Kings. इस मैच के बाद भंडारी चैलेंजर्स और मोहन थंडर्स के बीच एलिमिनेटर मैच यहाँ पर खेला जाएगा। तो इसलिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट दरख्वास्त निवेदन करता हूँ दोनों टीम के सदस्यों से कि एलिमिनेटर मैच के लिए मोहन थंडर्स और भंडारी चैलेंजर्स के सर्व खिलाड़ी स्टेज पर संपर्क करें, कमेंट्री बॉक्स को संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। We are just waiting for the third umpire decision. फ्लडलाइट्स की रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। निश्चित रूप से जो फ्लडलाइट्स के खंभे गाड़े गए हैं उनके जगमगाती रोशनी इस मैदान को और भी प्रकाशमय यहाँ पर बना चुकी है। और अंडर फ्लडलाइट्स ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ। और 21 लीग मैचेस के बाद क्वालिफायर मैच नंबर 1 इस वक्त प्रगति पर। नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। और बल्लेबाज बच चुके, काफी नजदीकी मामला था लेकिन अंतिम क्षण में अपना पैर जमीन पर रखने में सफल इस वक्त क्रीज पर बल्लेबाज, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर यहाँ पर रुक चुका है, डॉट गेंद इस वक्त गिर चुकी है और छठा ओवर इस वक्त उनकी पारी का शुरू हो चुका है। गेंदबाज इस वक्त तैयार, सुजीत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद जस्ट कॉल फॉर अ माइटी नॉट सक्सीडेड एंड दिस टाइम आई थिंक ही लॉस्ट हिज स्टंप्स। Just gone for a mighty not succeeded. The ball after beating his bat is stuck to his leg stump. Belts disturbed. Have a look at this in the replay. और यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछलना चाहे, उनके पैर पर टकराने के बाद गेंद स्टंप्सों पर टकराई और यहाँ पर ये विकेट नंबर 4 गिर चुका है। और देखिए वापस यहाँ पर दिखाया जा रहा है जस्ट द बॉल आफ्टर हिटिंग हिज लेग इट हिट टू द स्टंप्स एट द लेग स्टंप एंड द बैट्समैन डिपार्ट्स। मितेश is now backing to pavilion after playing a good knock for their side of 10 runs and a 4th wicket loss for Alba Super Kings. Now it's 35 for 4. New batsman is now comes out to the middle as a number 6 batsman तुषार इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद। सिर्फ 4 गेंदें अब बाकी अल्बा सुपर किंग्स की पारी में और देखते हैं इन बचे हुए 4 गेंदों में अल्बा सुपर किंग्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज सुजीत और तुषार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सुजीत अगली गेंद लेकर तैयार था, इन हाथों पर विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, सेंसिबल कर दिया। इस वक्त रनआउट का खतरा जी नहीं, इस वक्त निशाना चूक चुका है। ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन दौड़ते हुए रनआउट का खतरा, इस बार दूसरे प्रयत्न में विकेटों पर गेंद को लगाने में सफल और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो पहले प्रयत्न में गेंद जरूर छूटी थी विकेट कीपर के हाथों से, लेकिन दूसरे प्रयत्न में इस वक्त गेंद को फील्ड करते हुए कलेक्ट करते हुए विकेटों पर लगा दिया विकेट कीपर। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था एंड दिस टाइम इज गॉन, ही फेल जस्ट शॉट आउट ऑफ हिज क्रीज। So 35 for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress. Now 3 balls left. 36 for the loss of 5 wickets in fact. 3 balls left in overall calculation in their innings. You are just watching beautiful faces at the monitor. और विदेशी इस वक्त यहाँ पर सैर करते हुए इस शाम के वक्त यहाँ पर मैदान से गुजरते हुए निश्चित रूप से एक बेहतरीन पिक्चर हम यहाँ पर देखते हैं। इस बार गेंद को इस वक्त खेलना चाहता और इस बार एक बार फिर से ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है राइट इन फ्रंट ऑफ अस। दे आर क्रॉसिंग नाउ द फॉरेनर
lady and a man. So one more wicket fallen, and with that wicket number 6 down now. It's 36 for 3, 6 in the over number 6 in progress. Last two deliveries left in overall calculation in their innings. In the innings of अलवा सुपर किंग्स और राजेश सामना करते हुए इस वक्त सुजीत की गेंदों का ये गेंद ड्राइव कर दिया राजेश ने दमदार स्ट्रोक इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। इस बार रनआउट का मौका गंवाते हुए गेंद को ठीक तरह से गेंदबाज गैदर नहीं कर पाए और अंतिम क्षण में बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। देखिए किस तरीके से हुआ था इस बार। हैव अ लुक एट दिस रिप्ले एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली क्लीन रन आउट बट the bowler missed the ball at the last moment and because of that the batsman completed a second run very safely in the end. The last ball of the innings is not coming up. Outside the off stump misses wide ka ishara. One more run added to the total in the face of wide and the scoreboard is now moving up to 39 for the loss of 6 wickets. Still last ball left in their innings now. और सुजीत गेंदबाजी करते हुए राजेश के लिए उनके पारी के अंतिम गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछलना चाहे एक और वाइड का इशारा। वन मोर वाइड। नाउ इट्स गोइंग टू बी 1+1 once again. So they're looking for the second but won't get it. A wicket lost but 2 valuable runs added in the face of wide into their account, into their team's account in fact. 41 on the board. 41 for the loss of 6 wickets. Still 1 ball left in this over. 1 ball left in their innings in fact. सुजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए राजेश के लिए अंतिम गेंद लेकर तैयार। Down the track, gone for a big one. This time he lofted that one. Chance and taken a deep backward square leg. That is the end of Rajesh in the final delivery of their innings. And the innings is up for Alva Super Kings. They finished with 41 for the loss of 7 wickets. They started slowly but finished well with 41 for the loss of 7 wickets. And now they set a victory target of 42 for Gokul Tigers. So 42 runs Gokul Tigers have to score in the stipulated 6 overs with the required run rate of exactly 7 runs per over to qualify for the grand finale of this competition. And 42 runs for 41 for the loss of 8 wickets scored by Alwa Super Kings. 42 runs in the stipulated 36 overs. That means in their stipulated 6 overs Gokul Tigers have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them to qualify for the mega final of this competition. और देखते हैं मेगा फाइनल पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए गोकुल टाइगर्स को 42 रन बनाने 42 runs they have to score for victory in the stipulated 6 overs. That means in the stipulated 36 overs with the help of 10 wickets. और यहाँ पर देखते हैं गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाज इस 42 के लक्ष्य तक पहुँच पाते या नहीं निर्धारित 6 ओवर्स में। तो उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा गोपी जब यहाँ पर गोकुल टाइगर्स की पारी की शुरुआत होगी। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದರೊಳಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಂಚನೆ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 8 ದಿನಚ್ಚಿತಿನ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 11 ಉಂದೆತ ಪುರ್ಲಕಂಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ಕಾಲಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ರೇಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇವ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲಾ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಡಗೌಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪರ್ತೋಡು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ಪನೌದ ಬಿರಿತಾಂಗನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ವೆರ್ ಕದ್ರಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕದ್ರಿ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕದ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಬಲೆ ಉನ್ಕ, ಪದ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪದ್ವಾ, ವಿನೀತ್ ಆರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ, ವಿಶಾಲ್ ಲೋಬೋ, ರವಿರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ದುಬೈ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. Right, the inning starts for Gokul Tigers. 42 the target for them to qualify for the mega final of this competition against Alva Super Kings. And their openers are now comes out to the middle, Chetan and Ritesh. Meantime, the bowler starts the fresh proceedings is Mitesh, and the first ball of the innings is now coming up. Exactly 7 runs per over, the required run rate for them in the situation. The first ball of the innings is now coming up. Mitesh to the batsman, left-handed batsman. Chetan is now going to face. Non-striker is Ritesh. First ball comes. पहली गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद के साथ गेंदबाज मितेश इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाजी की। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार मितेश, जो कि काफी सफल श्रृंखला रहा है उनके लिए गेंदबाजी में। ये गेंद उछाला, खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती है। गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर शायद फील्ड कर ली गई है। वहां पर काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था और ऐसा कहना पड़ेगा। हैव अ लुक एट दिस रीप्ले, जस्ट लॉफ्टेड दैट वन। और गेंद यहां पर जाती अंतिम क्षण में वृक्ष के डाल पर टकराने के बाद जब तक वहां पर गिरे रास्ते पर, रोड पर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 2 रन्स, गुड स्ट्रक इन फ्रॉम द बैट ऑफ चेतन। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार मितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद टॉप एज एंड टेकन ब्रिलियंटली बाय द फील्डर बिहाइंड द स्टंप्स। Just gone for a mighty hit by the batsman Chetan at the last minute. Got his leading edge and short third man fielder took the catch very well. और यहाँ पर चेतन का विकेट गिर चुका है। उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास किया था। Have a look at this in the replay. Just gone for a mighty hit. Got his top edge and well held by the fielder standing just behind the wicket keeper at short third man. Raghu the fielder who took the catch very well in the final. And first wicket gone. Chetan the man departs. 2 for 1 for Gokul Tigers. 42 the target for them. And they stipulated 6 overs they have to score for victory, which is set by Alva Super Kings. और जहां तक सवाल है नंबर 3 बल्लेबाज का, द एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर ऑफ द साइड इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल इन द क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ मैच. ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಹನ್ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಂಡಾರಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. मितेश अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अंपायर इस वक्त कुछ इशारा करते हुए प्लेयर्स डगआउट की ओर, शायद कुछ बाधा वहां पर महसूस करते हुए. और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त मितेश तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते वन शॉट पर गेंद को खेलते इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. जस्ट सिंगल रिकॉर्ड और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका. कुल मिलाकर 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 3 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. The equal battle is now on. और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो रितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मितेश की गेंदों का. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद मितेश अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार गेंद को चिप कर दिया. 2 स्क्वायर ओवर द रूफ ऑफ द स्टेज फॉर अ कपल. तो यहां पर रन मिलेंगे 2 और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 2 स्क्वायर गेंद को उछाला था इस वक्त और 2 रन बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त करते हुए मितेश. और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार मितेश रितेश के लिए, जो कि पिछले गेंद पर 2 रन के साथ अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं. और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर मितेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद हल्के से गेंद को टॉप स्कूप करना चाहता, गेंद हमें में, गेंदबाज गेंद के नीचे आते हुए फॉलो थ्रो में बाईं ओर जाते हुए इस कैच को लपकने में सफल.
सफल होते हुए गेंद को इस वक्त टॉप स्कूप खेलना चाहता, विकेटों के पीछे गेंद को उछालना चाहता, लेकिन गेंद शायद टॉप एज पर यहां पर टकराई, हवा में उछली और बैक टू द बॉलर की दिशा में गई। हालांकि गेंदबाज को कुछ हद तक दौड़ जरूर लगानी पड़ी अपनी बाईं और 4-5 कदम है, लेकिन गेंद को इस वक्त बेहतर तरीके से लपकने में सफल। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से विकेट गिरा था और गेंद टॉप स्कूप टॉप एज पर टकराए थे इस वक्त। और आखिरकार कॉटन बोल्ड इस वक्त लपकते हुए मितेश पहले ओवर की समाप्ति 2 विकेट मितेश प्राप्त कर चुके हैं, 5 रन प्रदान कर चुके हैं और पहला ओवर इस वक्त मुकम्मल हो चुका है यानी समाप्त हो चुका है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मिक्स स्टार्ट फॉर गोगो टाइगर्स चेसिंग द विकेट टारगेट ऑफ 42 in 6 overs. Still in overall calculation, it's going to be 5 overs left. 37 more runs required in remaining 5 overs. That means 30 balls left and 37 runs more required for victory. Second over starts and the bowler starts a fresh proceedings. Jitu starts the fresh proceedings from the commentator box and second over starts in GT's innings, Gokul Tigers innings. 5 for the loss of 2 wicket after completion of first over. Second over starts in their innings. दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ जीतू इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए प्रताप जो कि सामना करने के लिए तैयार रहा। विकेट कीपर राजेश इस वक्त मॉनिटर पर दिखाई देते हुए फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त जीतू तैयार। पहली गेंद प्रताप के लिए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और जहां तक सवाल है सही गेंद का तो सही गेंद राइट डिलीवरी इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर। गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और स्कोर इस वक्त रह चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर जीतू इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत इस वक्त जीटी गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाजों को। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी, 36 और रन बनाने हैं यहाँ पर बचे हुए 28 गेंदों में और जीतू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, कवर पॉइंट फील्डर कलेक्टेड द बॉल. The batsman got a plenty of time to cross over for this single. With that single run, the scoreboard moving up to 7 for the loss of 2 wicket. और family इस वक्त husband, wife and a child watching this match very interestingly. Monitor पर इस वक्त दिखाया गया ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा प्रताप ने, चूंकि इस वक्त गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज जीतू इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त करते हुए और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 5वीं बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रताप के लिए यह गेंद, प्रताप का स्ट्रोक इस वक्त नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। 1 रन का इजाफा। मैदान पर हवा का रुख काफी हद तक कम हो चुका है, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आ रही है और बल्लेबाजों को स्ट्रोक्स खेलने में कुछ हद तक दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से प्रताप ने पिछला स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर गेंद बल्ले पर रुक कर आ रही है। और अगली गेंद जीतू की गेंद, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। गुड वर्क मेड बाय द शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर बट वोंट प्रिवेंट द सिंगल, लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय द अंपायर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। 9 for the loss of 2 wicket. One more good over. In Alva's Super Kings point of view game since 2 gone after 2 overs. Still the batsmen of GT Gokul Tigers searching for the right track. It's 9 for 2 after completion of 2 overs. And let's straight away coming back to the equation. And 42 minus 9, 33 runs more required in remaining 24 deliveries. And the required run rate is now straight away gone up to exactly 8.25 runs per over. 24 गेंदों पर 33 रन चाहिए और यहाँ पर दर्शकों को दिखाया जा रहा है काफी मात्रा में दर्शक इस मैदान के चारों ओर मौजूद। मैच का मुआयना इस वक्त काफी दिलचस्पी के साथ इंटरेस्टिंगली यहाँ पर करते हुए और इस वक्त कैमरा जो कि शाइन स्पोर्ट्स का फोकस करता हुआ दर्शकों के ऊपर मैदान के चारों ओर इस वक्त नजर फिराता हुआ। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए
ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 19 ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಿರ್ MLC ಮೇರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ಶಾಲುನು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಅಮೃತ್ ವಿ ಕದ್ರಿ ಮೆರಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪದುಕೇರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಿರ್ ಮೇರಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ धन्यवाद। और पहली गेंद लेकर इस वक्त यार एक्स्ट्रा क्विकर वन फ्रॉम मितेश मिसिंग आउट सादिल एक्स्ट्रा वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। तो एक बार फिर से श्रीमान आइवन डिसोजा जो कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर हमारे साथ स्टेज पर मौजूद है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कद्री क्रिकेटर्स क्लब रजिस्टर्ड संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमी की ओर से हार्टली वेलकम टू यू सर मिस्टर आइवन डिसोजा, बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एंड बिहाफ ऑफ द all the spectators, welcome to you sir once again to this prestigious cricket tournament. Mitesh again better again the fantastic delivery, extra quicker from the bowler, and the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. Some fantastic faces watching this fantastic tournament very interestingly. और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, और जहाँ तक सवाल है रनों का, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। बेहतर शुरुआत कर चुके, हालांकि वाइड के साथ ज़रूर शुरुआत की थी मितेश ने, लेकिन इस वक्त अपने श्रेष्ठ लय रिदम को वो प्राप्त करते हुए, और इस बीच नागेंद्र सामना करने के लिए तैयार, और इस बीच मितेश अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, and with that single run the scoreboard moving up to 11 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Still a long way to go for Goku Tigers, 31 more runs now they have to score for victory in remaining 21 deliveries। और मितेश अगली गेंद लेकर तैयार, नेक्स्ट स्पिन गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पर गेंद को इस वक्त उछाल दिया, लॉन्ग ऑन पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, जस्ट अ सिंगल ही गॉट and a quick single, and they completed very safely in the end। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, 12 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress। Qualifier match number 1 of this prestigious cricket tournament KPL Kadri Premier League season 11 2026 is now progressing here fantastically in this Kadri cricket ground। Mitesh again leg stump से बाहर, quick one, two for outside the leg stump missing, and a wide declared by umpire, and with that wide run the scoreboard moving up to 13 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress। मॉनिटर पर विकेट कीपर राजेश और बल्लेबाज नागेंद्र को इस वक्त दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, जो कि इस वक्त नागेंद्र सामना करते हुए मितेश की गेंदों कर, मितेश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट नागेंद्र के लिए, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ्ट, नॉट सक्सीडेड, विकेट कीपर मिसेस द बॉल, गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, कुछ हद तक उछाल लेते हुए, और इस उछाल को बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी समझ नहीं पाए, बाई के रूप में एक रन उनके खाते में जुड़ता हुआ 14 रन बन चुके हैं गोकुल टाइगर्स। दे आर नाउ 14 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress। Still a ball left in this over, मितेश bowls अंतिम गेंद प्रताप के लिए, रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त प्रताप ने, लेकिन डीप कवर पॉइंट पे फीडर, oh misfield, it could be gone over the fence, no in fact once again collected by the feeder just inside the fence, and before that the batsman got plenty of time to come back for the second run। So have a look at the stroke, मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, देखिए पहले फील्डर पहुंचे, गेंद पर मिसफील्ड कर चुके, दूसरे उछाल ली और उस उछाल को समझ नहीं पाए फील्डर, और दोबारा जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे सीमा रेखा के अंदर से बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total, 16 for 2, 3 overs completed, now 26 to get from remaining 4 overs, that means 3 overs in fact, that means remaining 18 deliveries, 18 balls 26 runs required run rate exactly 8.66 runs per over for the batting side in this situation। ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 19 ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದು ಕೊಡ್ತೀರು ರಾಜೇಶ್ ದುಬಾಯಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ। ಬಹುಶಃ ಕುರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುನ ಇಲ್ಲಗೆ ಎತ್ತುನಾಡ ಇಲ್ಲಡು ಬಳಕೆ ಆಡುನಾಡ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ನೆನಪುಗು ಒರಿಯುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಡಲಾಸಿನ ಅಂಗಲ್ಪಡು ದೀಪೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ದುಬಾಯಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ।
ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡೈನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಅಂಚಾದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ತೀರು ದೀಪಕ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ವಿಜಯ್ ಶೋಭಾ ಅಂಚನೆ ರವಿರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಮುಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಲ್ಮಿಲಿನ संदई तमलतुंदुल्ला थैंक यू। और इस बीच पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए निश्चित रूप से जो रेफ्रिजरेटर मैन ऑफ द सीरीज के रूप में इस वक्त रखा गया है मैदान के दाईं ओर इस वक्त विराजमान है जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है आसर फ्रेंड्स कद्री ने। और कद्री क्रिकेटर्स क्लब ने मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए उस रेफ्रिजरेटर को प्रदान किया जाएगा इनाम के रूप में। और इस बीच अगली गेंद इस बार बॉल्ड जस्ट कॉल फॉर अ रिवर्स शॉट नॉट सक्सीडेड दिस एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर। The batsman just wanted to play that one with the reverse shot. Extra quicker one for the bowler Tushar. Have a look at this in the replay. And it missing just outside the leg stump, beating the bat and just flicking the stumps at the leg stump at the last moment. Bells are disturbed. So one more wicket fallen. And the man departs is Nagendra. One more wicket fallen. Gokul Tigers looking in deep trouble in fact. Now the score is 16-3. ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 19 ಇವೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಇಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ So Shravan, the new batsman is now comes out to the middle as a number 5 batsman 16 for the loss of 3 wicket. Tushar गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य कुछ हद तक कठिन होता है. The equation seems to be a stiffer now for the batting side. Gokul Tigers in the situation 26 to get in remaining 16 deliveries. They badly required at least one boundary or 6 at this situation to get back into this match. फील्डिंग पर जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज तुषार और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार नए बल्लेबाज श्रवण का आगमन हो चुका है. इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 5 बैट्समैन फॉर गोकुल टाइगर्स. और पहली गेंद अगली गेंद लेकर तुषार इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में फिर से जमावट करते हुए इस वक्त विकेट कीपर राजेश इस वक्त डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात करते हुए. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो तुषार इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज नए बल्लेबाज श्रवण सामना करते हुए ये गेंद फुल टॉस जस्ट वेंट वाइड ऑफ द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट डायरेक्टेड इस वक्त लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद विकेटों पर निशाना जागा था. हालांकि एलईडी लाइट्स इस वक्त जरूर जल चुके हैं लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए. एक गेंद व्यर्थ हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाजों के ऊपर. द स्कोर स्टेज एट 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट 26 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 15 डिलीवरीज. और तुषार अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर तेजी के साथ उनके लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचा विकेट उखाड़े गए लेकिन इससे पहले कि विकेट उखाड़े बल्लेबाज के पास मौका था. इस बीच एक रन प्राप्त करने का जोखिम भरा रन लेकिन स्ट्रोक के साथ ही बल्लेबाज दौड़ पड़े थे और एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. इक्वेशन स्टैंड्स 25 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 14 डिलीवरीज. और इस वक्त तख्ता कुछ हद तक अलवा सुपर किंग्स का इस वक्त भारी लगता हुआ लेकिन कम बैक करने का मौका जरूर है गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाजों को. और देखना है कि बचे हुए 14 गेंदों में किस तरह से यहाँ पर कम बैक कर पाते हैं. और तुषार इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रताप के लिए. इस बीच रिवर्स शॉट खेलना चाहा गेंद को खेल दिया इस वक्त प्रताप ने खूबसूरती के साथ लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है डीप कवर पॉइंट पर और इसी के साथ प्रताप की पारी पर पर्दा गिर चुका है. ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट हिट दैट वन प्रीटी हार्ड बट कांट फाइंड द गैप एज वेल. और डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर जो फील्डर खड़े हुए थे एक बेहतरीन जजमेंट के साथ उसके हाथ को लपकते हुए देखिए मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से विकेट गिरा था. जस्ट प्ले दैट वन विद अ स्विच हिट and finds the fielder at deep cover point. और गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके. दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द डीप कवर पॉइंट फील्डर. अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए 3 से 4 कदम कैच को लपकने में सफल हो. देखिए यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. ही जस्ट हिट दैट वन प्रीटी हार्ड एंड द बॉल going towards to the fence and this is an absolutely fantastic taken by the deep cover point fielder. और फील्डर की इस बेहतरीन कैच की बदौलत वाइट विकेट बेशकीमती विकेट इस वक्त गिर चुका है प्रताप का. 17 रनों के ऊपर चौथा विकेट खो चुका है. एंड नाउ गोकुल टाइगर्स लुकिंग इन ट्रबल. इन फैक्ट 17 for 4 13 balls left and 25 runs required.
The asking run rate is not creeping up for them in this situation. Last time in this over, Tushar comes. Just gone for a mighty, not succeeded. Wicket keeper misses. They can't got any run. Fantastic over came from Tushar. Just 2 runs conceded in this over, and he's got the wicket. And after 4 overs, it's 17 for the loss of 4 wicket. Now 25 to get from remaining 12 balls, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 12.5 runs for over for Gokul Tigers. ಭಂಡಾರಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಹನ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಭಂಡಾರಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವು ಮೋಹನ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. The bowler starts the fresh proceedings. 5th over starts in their innings. Umesh, who bowled fantastically in the previous matches, and now here he starts the fresh proceedings from the commentator box on lefty batsman. Shravan is now going to face 25 to get from remaining 12 balls. They badly required a couple of big boundary or 6s at this stage to get back into this match. This is an absolutely... First ball, Umesh comes right arm over the wicket, bowls to Shravan outside the off stump. Just gone for a loft, not succeeded. Dot delivery. The ball kept low at the last moment and went into the hands of wicketkeeper. Then there is no possibility of any run. Now the equation stands 11 balls remaining, 25 to get. 25 रनों की दरकार 11 गेंदों में, और उमेश इस वक्त तैयार था ना तो बढ़ता विकेट. Bowled him, just gone for a loft, not succeeded. I think it's got an inside edge on that, and after being hitting his inside edge, the ball stuck to his leg stump. So just have a look at this in the replay. Just gone for a mighty heave, and yes, he's got an inside edge on that. And one more wicket fallen. The problems are now more building up for the batsmen of Gokul Tigers with this dismissal. Now the equation seems to be much stiffer for them. And the man dismissed is Shravan is now backing to pavilion. The scoreboard stays at 17 on the board for losing 5 wickets. Fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Alwa Super Kings. और अंपायर जो कि विकेटों को सही करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है. विकेट कीपर राजेश उबर कुछ बातचीत करते हुए अंपायर से, और बेल्स को इस वक्त विकेटों के ऊपर रखते हुए अंपायर, और 10 गेंद इस वक्त बाकी 25 रन चाहिए. 25 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 10 डिलीवरीज. मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है एक नन्हा लड़का जो कि इस मैच का मुआयना करता हुआ नन्हा बालक काफ़ी दिलचस्पी के साथ शायद किसी टीम का सपोर्टर हो, जो टीम इस वक्त मैच यहाँ पर खेली जा रही है गोकुल टाइगर्स और अलवा सुपर किंग्स के बीच. और इस बीच एक गेंद को ड्राइव कर दिया, उछाल दिया कहना पड़ेगा मिड विकेट पर. जब तक गेंद को फीड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका. 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. पांचवां ओवर इस वक्त प्रगति पर. 5th ओवर इन प्रोग्रेस. प्रकाश सामना करते हुए उमेश की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा. शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची. वाइड का इशारा अंपायर का. The ball just drifting down the leg side at the last moment. Wide called by the umpire, and with that single run, the scoreboard moving up to 19 for the loss of 5 wicket in the over number 5 in progress. उमेश फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए प्रकाश के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट. यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट पर. गेंद तक पहुंचते हुए फील्डर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. थोड़ी सी मिस फील्ड, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. जस्ट अ सिंगल ही गॉट. 20 for the loss of 5 wicket. ಮೋಹನ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರೋಣ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಮೇಶ್ अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार बेहतर गेंद थी. फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम उमेश इन दिस ओवर. द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ गोकुल टाइगर्स. 7 balls left, 22 runs required. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज उमेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद बॉल्ड आउट. वन मोर विकेट फॉलन. Just gone for out on the onside, not succeeded. Much straighter line from the bowler, and he just get rid of the batsman. Have a look at this in the replay. और उमेश की गेंद ये जो थी सीधी रफ्तार के साथ ऑन साइड पर खेलना चाहिए. Just played that one absolutely with a wrong line, and he just paid the penalty for that. One more wicket fallen. 6th wicket gone. 20 on the board. 5 overs completed. Last over remaining. 22 runs to get from the last over. That means in remaining 6 deliveries for Gokul Tigers. Absolutely a difficult task in front of them.
So the bowler starts the fresh proceedings. Raghu the bowler, first ball outside the off stump, missing the line completely, and collected by wicketkeeper behind the stumps. Dot delivery. Now 22 of 5 dealer. The equation stands for GT गोकुल टाइगर्स. 22 रन चाहिए 5 गेंदों में और गेंदबाज रघु अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार है. यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. द बॉल वेंट इनसाइड द फ्लेक्स. इन फैक्ट द सर्चमेंट इज गोइंग ऑन देयर. और गेंद फ्लेक्स से बाहर निकलकर इस वक्त आ चुकी है और 2 रन इस वक्त बल्लेबाज और टीम के खाते में. जो श्री राघवेंद्र का जो फ्लेक्स था उसके अंदर से गेंद घुसकर इस छोर से घुसकर उस छोर से बाहर निकलती हुई इस बीच बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करते हुए 20. और रघु अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार. इस बार गेंद को उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. जस्ट अ सिंगल ही गॉट. Scoreboard moving up to 23 now. Leg bye declared by umpire. And now just 3 balls remaining in their innings. 3 balls, 19 runs required. 3 sixes required for the victory. Not for victory, but for tie in the last 3 deliveries. Driven, perfectly struck, down to long off. Fielder collected the ball. Just a single he got. 24 for the loss of 6 wicket now. Now just 2 balls left, 18 runs required. अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो यहाँ पर अलवा सुपर किंग्स की विजय निश्चित है. लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक अंतिम गेंद फेंकी जाए. क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज. और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. 2 गेंदों में वाइड का इशारा. Just shifting down the leg side at the last moment. And 1 run added to the total in the face of extras wide. 25. 2 balls left. Again a wide. 2 wides in a row. 26 on the board. अब रघु 4 बेहतर गेंद फेंकने के बाद 2 वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं. Now the equation stands 16 to get from 2 balls. रघु इस वक्त तैयार. Lofted into the gap and it's got, in fact they got single. They won't get this. In fact they come back for the second and they get it comfortably. 28 for 6. Now just last ball remaining. 14 runs to get. Almost an impossible task in front of the batsman's side in this last delivery. Again pass Raghu. Lofted down to a mid wicket, gets in a single. That's it. 12 runs victory for Alwa Super Kings against Gokul Tigers, and with that 12 runs comprehensive victory, they are through to the grand finale of this competition. And now the eliminator match is now going to play between Mohan Thunders versus Bhandari Challengers. And the Bhandari Challengers are won the toss, and winners of this match, winners of this eliminated match will meet Gokul Tigers in the qualifier match number 2, and that match is now coming up live and exclusively right after the eliminator match. And Alwa Super Kings through to the grand finale of this competition. Aasare friends Kadri ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 19 ಈ ಪುರ್ಲಕಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ. Thank you. ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಲ ಮೋಕೆದಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರೊಂದುಲ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗರದ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದ ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಲ ಮೋಕೆದಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಾಪು ಅತ್ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಭಿನ್ನಾಪು ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ವರಿಯೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬರಡು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 19 ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಆಯಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಡು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಬಳಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತನಾಡ ಬರಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆಗ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬಾಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ದೂರಾಡು ಉಂತರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬರಡು ಇಂದು ನಿಕುಲು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ
ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ದೂರಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಪುನಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಸುಧೀರ್ ಕದ್ರಿ ಅಮೃತ್ ವಿ ಕದ್ರಿ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾ ಗೋಕುಲ್ ಕದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಓನರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಲಿಪ್ಪುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ KCCR ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಡು. ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ KCCR ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಡು. KCCR ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಡು. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಿಕೆದ ಕ್ಷಣ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಮೋಕೆದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಆದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಿತಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಬರುಡು ನಾಂಡ ತುಡರಾಯ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಡರ್ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ತಿಬಿಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುಜಿ ಐಕು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಐಕು ಒಂಜಿ ಪಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಅಗ್ನಿದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅವಡಿಗೆ ಅವು ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿಬಿಲೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಾಯಿಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಬಿಲೆ ಪೊತ್ತುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತುಡರು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಏಪಕಲ ಪನ್ಪುಜ ಬತ್ತಿ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕರಗದು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದು ಅವು ತನ್ನನ್ನು ಪೊತ್ತದು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊಂಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಕಲ ಪನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ತುಡರು ಬೊಲ್ಪು ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಆದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಿತಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮುನು ತನ್ನ ಮಟ್ಟೇಳು ದೀವೊಂದುಂಡು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉದರ್ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದಾಂಡ ಅವತ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆದ
ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ಯದ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಒರಿಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬಿಯನ್ನಾಂಡ ಅಯ್ಯ ಪಿರೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಆ ತಂಡಡ್ ಉಪ್ಪುಜೆ ಅಯ್ಯ ಪಿರೊಂಜಿ ತಂಡಗ್ ಪೋಪೆ ತದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಪಾಯಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚಾಂಡು ಅವು ಇಂಚಾಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೇಟ್ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಂಬು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಈ ತಂಡಗು ಬತ್ತದ ತಂಡಡ್ ಎಟೇನ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಟೇನ ಗರ್ತೇನ ಈ ತಂಡಗ ಕಣತದ ಈ ತಂಡಗ ಒಂಜಾತ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ದುಂಬೆ ಬೈದ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಹಂದ ಪಾತೆರ ಪನಂದೆ ಎಂಕಲ್ ನಕುಲು ಅಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆನ ಉಡಳ್ಳು ದೀವೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂದನು ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಬಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆ ತಂಡರ್ದು ದೂರ ಇತ್ತಂಡಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಂಡುಂದಾಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನು ಬರೀ ಮುಂದಾಳತ್ವಡು ಅವತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮೂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆ ತಯಾರಾತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 11 ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಸೆನ ತೀರಿಸವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತದಾಡಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ನಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ತಂಡಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರಿತ್ತು ನಾಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಮೋಕೆಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೌಡು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂರ್ಯನಗರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೌಡು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೌಡು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಸ್ವರ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಈ ದಾದಾಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ನಾಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೇರ್ದಾದು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕದ್ರಿದ ತಂಡ ಆದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತಂಡ ಇನಿಕ್ಕಾನಗ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡುತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡಗ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೇರ್ದಾದು ನಿಖಿಲ್ದ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಷ್ಠೆರ್ದಾದು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ಅವೇತು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿಖಲು ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಪುಗರ್ತೇನು ಏಪಗಲ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆ ಟುವಾಲಗ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಭಿನ್ನಾಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನಗ ಮೊಕಲೇನ ಸಾಧನೆದ ಸಾಲಲೇನು ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರಿಹಿಲ್, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿಯವರ 9 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 2/8/1981 ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ITI ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟುವಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಇವರ ಒಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ತಾನೋರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಇವರ ಮನದಾಸೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. 2005-2006ರಲ್ಲಿ KCCR ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಇವರು ರಾಜೇಶ್ ಆಗಿರದೆ ಕರ್ಬರಾಜು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಲೋಕಲ್ ತಂಡವಾಗಿದ್ದ KCCR ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ
ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಕ್ರೀಡಾ ಬದ್ಧತೆ, ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರವೇಶ ಆದಾಗ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಣಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಬಗೆಗಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 46 ಮತ್ತು 48ನೇ RR ಪೈ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ 30 ಓವರ್ಗಳ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಎಂದೇ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 11ನೇ ವರ್ಷದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ್ ಕದ್ರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ. ರಾಜೇಶನ್ನ ಈರನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಈರ ಮಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡು ಪುದ ಕಜ್ಜ ಏನಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ನ ಕಣತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಿತ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರೇನು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಾದ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಹೊರಲು ನೀರಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ದೈವ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರತು ಕಾಪಾಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ದಿವಂಗತ ಬಿ ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾ ಆಚಾರ್ಯ ಜಯಶ್ರೀ ಗೇಟ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಮೂವರ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12/1/1985 ಜನಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಇವರದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪದವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಕೆಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಇವರು MMC ಮೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಆದರ್ಶ್ ಕೈಕಂಬ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲ್ಪನೆ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. 2008-2009 KCCR ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಲೋಕಲ್ ತಂಡವಾಗಿದ್ದ KCCR ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳೂರು ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 30 ಓವರ್ಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ KCCR ತಂಡವನ್ನು 1 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು 1 ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಬಗೆಗಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಒದಗಿಸಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 11ನೇ ವರ್ಷದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂರ್ಯನಗರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂರ್ಯನಗರ, ಶ್ರೀ ಧೂಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿಯವರ 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 2ನೇಯವರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 17/5/1985ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್, ಮುದ್ದಿನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಚಾಲಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ದು ಇದೀಗ 3 ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿದ್ದ ಇವರು ತಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇವರ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SFFC ಸೂರ್ಯನಗರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು 2013-2014ರಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ KCCR ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಚೇತು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಿನುಗು ನಕ್ಷತ್ರ. ಮೊದಲು ಲೋಕಲ್ ತಂಡವಾಗಿದ್ದ KCCR ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷಮತೆ, ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ತಾನು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರವೇಶವಾದಾಗ ಕಿರಿಯರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮದು. ಕಳೆದ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 46 ಮತ್ತು 48ನೇ RR ಪೈ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ 30 ಓವರ್ಗಳ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಎಂದೇ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಬಗೆಗಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂರ್ಯನಗರ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿ ನನಿಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನಲ
ಎಂಕಲ್ನ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಲನ ಏಪ್ಪಲ ಮದ ಪೂಜ ನಿಕಲು ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇರಿ ಬಲನ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಏಪಗಲ ಮರಿ ಪೂಜಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರಿ ಬಲನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರಿ ತಾಂಗನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಿಯತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿನ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ನಿಕಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಜನರ್ದು ಯುನಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಬಡತನ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಕಜ್ಜನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಂಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲು ಸದಾಕಾಲ ನಿಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ನನಾತ್ ಸಾಧನಲೇನೆ ಈ ಮನ್ನಡು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲಕ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಈ ಪರ್ಲ ಬಳಿಕೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆನ ಪಾಡುದು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಪೊಲ್ಲುನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬರಡು ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವರ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನಾರು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತು ಇತ್ತಂಡಲ ಸಾರ ಜಬದಾರಿದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದಲೆ ಪುಗು ಓಕೊರ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಪದುಕೆರಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐವಂಡಿ ಸೋಜೇರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಉಡಲದ ಪಾತೆರನೆ ಎಂಕಲ ದುಂಬತ್ತದಿ ಓಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸರೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 6 ತಂಡಗಳು 7 ತಂಡಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಈ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 165 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ 160 ಕೋಟಿ ಜನರು ಆಡುವಂಥ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಟ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 11 ಮಂದಿ 11 ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಚಿಂತನೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವರವರು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ 11 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನನ್ನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಟ ಕೂಡ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದಾ ದೇಶದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ 11 ಮಂದಿ ಆಟದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಟೀಮು ಈ ಟೀಮು ಇಲ್ಲ, ಆ ಟೀಮಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 11 ಮಂದಿಯೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈದಾನ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ
ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ತಂಡ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಸೇವೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾವೀಗ 3 ಮಂದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆ 3 ಮಂದಿ ಏನು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಏನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲಬ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇಂಥ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು 8 ಜನ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ, 5 ಮಂದಿಯೂ ಆಡ್ತಾರೆ, 6 ಮಂದಿಯೂ ಆಡ್ತಾರೆ, 11 ಮಂದಿಯೂ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಾನು KL ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಟೀಮಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು, KL ರಾಹುಲ್ ಹತ್ರ, ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಗರಿಯ ಅದ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ ಟೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು IPL ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದು ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ನಾವು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಮೃತ್ ಕದ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಲಕರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ఆయన ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ್ ಮಿತ್ತು ವೈ ಜೀವನೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಟೀಮು ತುಂಬೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಆತನ ಫೈನಲ್ ಬೋಪ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೋಕುಲ್ದಾಸನ ಟೀಮ್ ಆರ್ನ ಏಪಲ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಬೇರಾರು ಆರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೂಲ್ಲೇರು ಭಂಡಾರಿ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಆರ್ಲಾಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮೇರ್ನ ಅಂಡ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣನ ಲೀಡ್ಸ್ ಆರ್ಲಾಂಚನೆ ಲಯನ್ ಅತ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಏಪಲ ಪಿಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒರಿ ಒಯ್ತು ಹಾಕ್ಯ ಮರೆ ಆನ್ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಎಕಾಡದ ಟೀಮ್ ಉಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಪುರಾಜನ ಔಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಆರು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಒಯ್ತು ಕೊರಿಯರು ಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪ ಪಿಲಿತಲೆಗ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಮರೆ ಓಲಿತ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಲ ಒಂದಿತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ನೀನು ಅಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಮರದ ಅಡಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ ಗ್ರಾಚಾರ ಇಚ್ಚೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೆಂಡ ನೀನು ಮಾಡಿಡ್ಲ ಆಪುಂಡ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಲ ಬಂಡ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಾಗಿಂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಔಟ್ ಒಂದೇಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಗೇಮ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಿಕವರ್ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಹಾಕಿ ರಿಕವರ್ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ will lose your future. Anchad is a very, very important game in the list of the cricket. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ಟೈಟನ್ ಅರ್ವಲ್ಲೇರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋತ್ ಸೊ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುಭ ಅವಡೆ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ಮಾತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೊಬ್ಬಿಯರಿ ಐನೇನು ಆಜಾಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಲೇನು ಬಂತೇನೆ ಎಂಬು ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಐನೇನು ಆಜಿ ಕೆಮ್ಮು ಗೊಬ್ಬನದಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಎದುರು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬರಡು ಪಣಪುನ ರೀತಿ ಪಂಡದು ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜೈ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊರ್ತದ ತುರ್ತಿ ತಂಡಲ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿಲೆಪ್ಪುಗ ರಡ್ಡು ಕೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ
ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜೆರೆಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಿಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರು ಯುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬ್ಲಾ ಅಂದೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಜಯಂತ್ ಮೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡಿದು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬ್ಲಾ ಅಂದೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕದ್ರಿ ಅನ್ನ ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಬತ್ತಿನೆಕ್ಕಿ ಇರೇನು ಇರೆಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರು ಹರೀಶ್ ಮೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡಿದು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೋಡು ಕದ್ರಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೇನು ಅಣ್ಣ ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಾರು ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿತೇಶ್ ಮೇರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಿತೇಶ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಿತೇಶ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರು ಮಿತೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತೇಶ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಿತೇಶ್ ಮಿತೇಶ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿತೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿತೇಶ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರ್ನ ಪರವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಂದೇನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ದೀಪಕ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ವಿಜಯ್ ಶೋಭಾ ಅಂಚನೆ ರವಿರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೇ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ್ಕ ರೇವ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗ್ ಮೊಕ್ಲೋಟ ಗೌಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 19 ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ಪನೌದ ಬೆರಿತಾಂಗನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಕದ್ರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕದ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಲೆ ಉನ್ಕಾ ಪದುವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪದುವಾ ವಿನೀತ್ ಆರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ವಿಶಾಲ್ ಲೋಬೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಇಶಾನಿ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಜಯ್ ಆನೆಗುಂಡಿ
ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಮ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಶ್ರೇಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಯಾನ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಮ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡೈನ ಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಇಂದೇನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ರಾಜೇಶ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಮ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ದೀಪಕ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ವಿಜಯ್ ಶೋಭಾ ಅಂಚನೆ ರವಿರಾಜ್ ದೈವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮೃತ್ ವಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ KCCR ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಗೌರವ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರು ಎರಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನ್ನಾಪನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮೃತ್ ವಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲುನ ಪಾಡದು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನ್ನಾಪನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಗೊಂದು ಕೇಳನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೀಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಐಕ ಓನರ್ ನಕ್ಲು ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಅಮೃತನ ಮಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ತಂಡನ ಕಟ್ಟದು ಇನಿ ಆ ತಂಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇರೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮೃತನ್ನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಕಲ ಇರಿನ ಮೋಕೆ ಜೋಕೆ ಏಪಗಲ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ಅಮೃತನಾಗ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಲೋ 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 ರಡ್ಡು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಬೆರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್
ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಿರೂಪಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದ್. ಬರ್ಪರ್ ಅಂಪೈರ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ ಉಂಡು ಲೈಡ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ ಉಂಡು ಲೈವ್. Hello. Hello. So the eliminator round is going to start. Bandari Challenges versus Mohan Thunders. Right, this eliminator match is now going to start between Mohan Thunders versus Bandari Challengers. So the first ball of the match is now coming up, and so Bandari Challengers have won the toss. They elected to bat first. First ball of the innings is now coming up, and a wide declared by umpire.
Sandeep and Damodar this time driven that one perfectly into the gap as well. Has got a single and that single brings Mohan Thunders Bandari Challengers after 1 they elected to bat first in the first ball. Second ball they conceded a run, and next ball comes from the bowler right arm over the wicket here. He bowls to right-handed batsman Damodar. Manjunath the bowler outside the off stump, lofted that one into the stage, into the roof of the stage. In fact, he's got a single for that stroke, and with that single run the scoreboard moving up to 3 on the board in the over number first in progress. Eliminator match started, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त eliminator match का, तो 3 रन इस वक्त बन चुके हैं. इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ. इस वक्त मिड ऑफ पर गेंद पहुंची, और जहां तक सवाल है रन्स का, तो रन्स इस वक्त मिले 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत यहां पर करने की कोशिश में दोनों सलामी बल्लेबाज भंडारी चैलेंजर्स के टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाज यानी बैटिंग करने का निर्णय लिया था, और मंजुनाथ की गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई डिफ्लेक्ट होती हुई निकली इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि अगली गेंद लेकर तैयार, ड्राइव कर दिया खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल. लगे जाते हुए डीप कवर पॉइंट की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड, और यहां पर मिसफील्ड की बदौलत बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके. भंडारी चैलेंजर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है इस एलिमिनेटर मैच में, और 6 रन बन चुके हैं इस वक्त बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनके पारी का प्रगति पर. दामू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, और मंजुनाथ बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए साइड पर गेंद को खेल दिया. इस वक्त गेंद जाती हुई मिड ऑन की दिशा में. Just a single he got, single to end the over, direct hit. In fact, they're looking for the second, and this time he's gone. Misunderstanding cost him one of them back into the pavilion. और जैसे ही गेंद स्टंप्स पर टकराई, इस वक्त दामोदर दूसरे छोड़ के दौड़ पड़े रन के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं. यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, और पहला विकेट इस वक्त खो चुका है भंडारी चैलेंजर्स. Now they are 7 for 1 after completion of first over. 6 overs per side to be played. That means तो इस वक्त पहला ओवर पूर्ण हो चुका है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और इससे पहले कि दूसरा ओवर प्रारंभ हो, एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में आंखों देकाल सुनाने के लिए. आइए सतीश, धन्यवाद. थैंक यू. Thank you so much, Gopi, and good evening all cricket lovers. And it's going to be a very interesting stage of this prestigious KPL Kadri Premier League 2026, which is proudly presented by Kadri Cricketers Club registered Kadri Mangalore. The eliminator round is on Bandari Challengers versus team Mohan Thunders. It's going to be a do-or-die match for both the teams, and wait and see which team is going to handle the pressure in this big match. Right, over the kitty balls to Sandeep. Sandeep just wanted to get that one in the onside region, beaten by that delivery which is almost around the legs of the batter. Well, usually Sandeep is very strong off his legs, but fails to make any impact in that delivery. No run scored. 7 for 1 in the over number second is in progress. This time, what a delivery. This is an absolutely fantastic delivery. Outstanding delivery. Sandeep's shot selection is not really spot on. Have a look at it on replay. It was absolutely wrong shot selection. Going for the big shot when the ball is in the midland leg stump and you're trying for the switch it is always asking for trouble. You have to connect the ball, otherwise the ball will go to hit the stumps. And this is not a good start here for team Bandari Challengers. They lost 2 wickets for 7. And Dikshit once again got a very good start from his bowling with the wicket. Alwa Super King already they are made the way to the mega final of this prestigious KPL. Some entertainment in the ground, not in the form of cheer girls, but he may be the cheer boy here in this KPL, and some kind of entertainment certainly needed here. Definitely it was just like a cheer girl, isn't it? And but here is a cheer boy, not to disturb the cricket, that's very important. And so
Of course, in the middle, in the break, I can get some enjoyment. It's 7 for 2 in the over. Number third is in progress. The cameraman absolutely focusing that man who is enjoying his own world. Dixit. Appeal for leg before wicket. Certainly that ball going down the leg side. A good stop. The fielder is trying for the run out. Leg by call by umpire Pushparaj. And with the addition of that leg by Skobana moves on to 8 for the loss of 2 wicket. Imran, the new batter, came into middle. The very experienced man. Know exactly this is a cricket ground he loves the most. Who started his career in this particular cricket ground and given a lot of service for KCCR Kadri. Such a wonderful character as far as all-rounder is concerned. Now Atif being the icon player, this is a very important match for him that he need to take the responsibility in his shoulder. But Dikshit here is looking so good so far. 4th time in this over. Atif just drags it from outside the line of off stump. Intention is to play that one into the offside region because of he's played it too early. Didn't got that much of timing enough and ball went straight to the hands of short mid wicket. Santosh the fielder fields the ball. No run scored. 8 for 2. Lofted. Nice looking lofted right, but this time they will going to get a couple of runs. That's sure. You can't get more than in this position. The couple of runs anyway added to total. With that couple of runs, Skobana moves on to double figure. 10 for loss of 2 wicket. Last delivery remaining in this over. Dikshit to Atif. Open the missed it because Manjunath quite deliberately bowled that outside the line of leg stump and no run scored. 13 for the loss of 2 wicket. 4th time in this over. Oh, extra bounce in the irrigation. Wicket keeper absolutely missed it. It might be a tough one here for wicket keeper Ravi Sali and Padayu to take that catch. But any run which is completed. 14 for loss of 2 wicket in the over. Number 3rd is in progress. Here comes appeal. Is gone. Flum in front of wicket. Atif departs. My goodness, can you believe this? Manjunath absolutely got a ripper here for the batter Atif. He's just finding himself right in front of stump. Just to try to get that one in the onside region. The delivery which is almost in the mid-line leg stump. The wicket number 2 gone. Huge one here for the team. Mohan Thunder after scoring 4 runs is back in the hut. It's 13 for the loss of 2 wicket. It's 14 for loss of 2 wicket after completion of over number completion of over number 3. The bowler brought into attack. Sai Sandhu will be the bowler in the 4th over. The new batter already occupied the crease in the non-striker's end. Imran to take the strike. Santosh balls. Beautiful delivery. Such a good condition for the bowler like Sai Santhu when you are bowling in under light condition, especially in this cricket ground. The bowler like Sai Santhu will going to enjoy the condition. If you bowl a very good line and length, always a difficult chance of edging it down to third man region. Imran quite deliberately, because the ball is not in that short pitch line which is moving from the good length spot, just going away from the right-hander batsman. Imran shaping away. Now Imran got a bat onto that and picked up a single. With that single, Skobana moves on to 15 for the loss of 3 wicket in the over. Number 3rd is in progress. 4th is in progress, in fact. Around the wicket, right arm. Copybook style. Nice looking drive there from the batter. Played it down to long off region for a single. With the addition of that single, Skobana moves on to
16 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. This time you wanted to go for the big shot. One more addition to total in the form of bye. Score moves up to 17 for loss of 3 wicket, and team Bandari challengers searching for the right track. Switch it attempt, and they played it nicely in the gap, and they will going to come back for the second. No chance for second there. One more addition, real addition of that single score was on to 18 for the loss of 3 wicket. Vishal the batter, and technically sound player. The 2 strokes he's played has been absolutely perfect one, whether it's going to be orthodox or unorthodox. This time opportunity of run out is gone. It's absolutely absence of mind here from Imran. Ball definitely went past the wicket keeper, but there is a fine leg, is very fine. Just have a look at the replay. And Vishal starts a little bit. Imran thought it might be a run, but the fielder has done a great job. He has got an underarm throw directly into the stumps. No way Imran survived from that run out. And this is going to be a good comeback here for Mohan Thunders. They succeeded to put some pressure onto the batters of Bandari challengers by picking up wickets in a frequent intervals. So 4 gone, it's 18 for 4. 2 days of wonderful cricket tournament under floodlight, day and night cricket tournament. Today will be the final day of this cricket tournament, and champion this other day. And we wait and see which team will going to become the champion here. Out of 7 teams, 1 team will going to become the champion. Already the one team which is made their way to the final. Alva Super King is absolutely made a history, even though they are first time. Oh, what a delivery! Fantastic one through the gate. We are just talking about the Vishal's technique is very sound in the technique, in his footwork, but sometimes underarm cricket is not an easy game. Just have a look at the delivery. Fantastic. Nowhere near the pitch of the delivery. Just talking about his front foot, you can see that is not really coming to the line of the ball. The ball is absolutely did the trick with the bat and pad, the huge gap. That may be the intention of the batter to get the placement down to extra cover. But that was a fantastic delivery indeed. 18 for the loss of 5 wicket. Every fall of wickets there will be a cheer boy cheering the wicket. Definitely will be the supporter of Mohan Thunder, because when the runs are coming he is not cheering, but when the wickets are falling he is ready to have some cheer. So 18 for 5. Pawan strikes here with a fantastic delivery, which is coming into the batter very sharply. Prasad, the new batter, in experienced man. The facing Pawan is looking so good, very controlled. Down the leg side it goes, going to be a wide, one more extra there. Each and every run going to be, already I mentioned about the whatever the number of extras you are conceding, that will going to be a huge one for the opposition, because this is the one cricket ground. You need to be very disciplined in the bowling. The more extras, more trouble. It's 19 for 5. Again wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. One more dot ball here. Altogether 20 boundaries and 16 sixes so far in this tournament. That shows is how difficult its ground is going to be for the batter. Even though 2 days of day and night cricket tournament, you are getting only this small number of boundaries and sixes. Again, lovely delivery shot. Tried to york the batsman again. Negotiated very well by the batter. Prasad not let the batter to settle for the yorker and delivery. Picked up a single. Very watchful in the negation.
Prasad 20 for 5 in the over number 5 in progress. Pawan. This time I wanted to go the drive, edging it down to third man region. They're quickly going for the single with that single score button was on to 21 for 5. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಪರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಲ್ ಮೈ the fantastic spectators. You are the one absolutely responsible for the success of the cricket tournament. From in front of wicket, one more wicket, the back in the hat. The wickets are tumbling here of Bandari Challengers. It's been a fantastic bowling display from the bowlers of Mohan Tandar. It's absolutely thunderstorm here from the bowlers of Mohan Tandar. One more beautiful delivery, easy decision there for the umpire to raise his finger. Now Bandari Challengers are looking in more trouble. 21 for 6. This we're talking about the spectators, those who are responsible for success of any cricket tournament, because without the spectators we cannot accept any cricket tournament. And they are the one we can see that from the youngster till the senior is not, there is no age limitation, because love and affection towards undrawn cricket is absolutely unmatchable. It's 21 for loss of 6 wicket. Pawan to continue. 2 wickets in this over, first 3 runs. Excellent bowling performance. This time wide outside the line of off stamp. This is the one area the Pawan is absolutely need to work out a lot. The second wide of this over, when the batter is under tremendous pressure, your bowling wide means the pressure is off there from the batter. Dhiru, the new batter. Again deflected from his leg. Even the ball is just tripping down the leg of the batter. Leg by call by umpire Sri Raj. It's 23 for 6 after completion of 5 overs. Last over remaining in the innings of Bandari Challengers, and wait and see how well the Bandari Challengers batter will going to get runs in this last over of their innings. Alwa Super Kings, the first time they're taking part in this KPL season 11, and they made a history that first time under the ownership of Dilraj Alwa they are through to the final. Congratulations for the team Alwa Super Kings. They're into the finals. This is the Eliminator. After this there will be a qualifier number 2 between winner of this match and the loser of qualifier number 1. Gokul Tigers, they are observing this match. They're just calculating which team they wanted to meet in this qualifier number 2. Will it go into a Mohan Tandar? Will it go into a Bandari Challengers? Bowler brought into attack for the last over. Down the leg side it goes. It's going to be a bonus again. This is something which is the team Mohan Tandar have to pay the penalty for that, all extras they bowled. Wide +1, couple of runs added to total. Devi the bowler brought into attack, and couple of runs gifted for the opposition team. It's 25 for loss of 6 wickets. Devi balls chipped it away nicely over the head of the bowler by Mahesh. They wanted to come back for the second again. This is turning out to be a good start for the last over. The very important runs are coming for the Bandari Challengers in this over. So for 1 ball bowled and 4 runs scored. 27 for 6. Already mentioned, this is one cricket ground is very difficult for to get the runs. You need to work hard for each and every runs from the bat. Not quite intended. Mahesh just tried to work that one on to the onside region, leading edge of the bat. That landed safely between cover and mid off. 28 for 6. Last 4 deliveries left. Dhiru back on strike. Devi drives that one into mid wicket and chance of run out. Undrawn throw. It's not quick enough. It's not quick enough there from shortman wicket fielder to make the run out. Even the ball went straight to the hands of fielder, but they are dealing with the final over.
They wanted to take the every chance. Just have a look at the throw. It is not a good throw. The batter absolutely out of the picture when the ball is in the hands of the field. The quick throw is going to be a chance of run out. It's 29 for loss of 6 wicket, 3 balls remaining. Mahesh, the experienced man. Nice little one in the gap towards the mid-wicket range, and they completed single, looking for 2. Then in comes a throw from the fielder, and they completed a couple of runs. Excellent running between the wicket. This is how you are going to play the last over, isn't it? You are not bothered about the wickets, fall of wickets, but you only bother about the runs, which is very much required for the team Bandari Challengers. 31 for loss of 6 wicket. Now they got enough runs. It is going to some kind of confidence for the bowlers to bowl. Oh, lovely shot, chipped it away. But unfortunately, Mahesh will go into settle for a single for that. Needed some luck as well for the batter sometime when you're playing cricket in this particular cricket ground. 32 for loss of 6 wicket. Last delivery of the innings of Bandari Challengers. And Dhiri will go into face Devi. Again, it's going to be a one more run there. It's from the bat or it is from the bye. Just wait for the umpire. It's a leg bye. So that's it. The team Bandari Challengers, they finished their 6 overs quarter with exactly 33 runs on the board, and they set a target of exactly 34 to win this match for the Mohan Thunder to qualify for the qualifier number 2 of the prestigious KPL Season 11, which is proudly presented by Kadri Cricketers Club, registered Kadri, Bangalore. And it's going to be a very competitive total on the board. And at last, the team Bandari Challengers, they started very slowly, progressed very slowly, but they have finished with the good runs in the last couple of overs, so that they are now going to depend that 33 runs and 34 to win the match for the team Mohan Thunders. We'll take a short break in our commentary box. After a short break, once again my long time commentary partner, my greatest friend Mr. Gopi, to take over the microphone in Hindi language. Thank you and welcome, Gopi. धन्यवाद सतीश. So लक्ष्य इस वक्त 34 रनों का 34 the target in 6 overs they have to score for victory to qualify for the qualifier match number 2 of this competition. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती है. पहली गेंद लेकर तैयार आतिफ इस वक्त चिप कर दिया गेंद को ऑफ द टोज. गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर इनटू द स्टेज. और जहाँ तक रनों का सवाल है तो 1 रन यहाँ पर
अंपायर घोषित करते हुए और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है मोहन थंडर्स के लिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। आतिफ दीक्षित इस वक्त सपना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका। 2 रन बिना किसी नुकसान के मोहन थंडर्स और भंडारी चैलेंजर्स इस वक्त भिड़ते हुए इस एलिमिनेटर मैच में इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट कद्री प्रीमियर लीग सीजन 11 2026 और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइनल की दिशा में, रन के लेवल में बात तौर पर 9 सेकंड पर खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। मंजुनाथ का विकेट यहां पर गिर चुका है। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, गेंद को स्वीप करना चाहता, विकेट की पहुंच चुके, शॉट फाइनल पर गेंद पहुंची और जब तक मंजुनाथ स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर पर पहुंचे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ और गेंदबाज आतिफ ने विकेट इस वक्त उखाड़ दिया और पहला विकेट गिर चुका है इस वक्त मंजुनाथ के रूप में। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मंजुनाथ डिपार्ट्स। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल। रवि इस वक्त रवि सालियान जो कि सपना करने के लिए तैयार और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ द टोस गेंद को खेलना चाहा, गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और 34 रनों का लक्ष्य इस वक्त उनके सामने। आतिफ की गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त मिलेंगे 2। अंतिम अक्षर में गेंद को ऑफ द टोस चिप किया था और 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। निश्चित रूप से एक साझेदारी की सख्त जरूरत यहाँ पर मोहन थंडर्स को, अगर उन्हें 34 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 6 ओवर में उनके गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाजी की। 33 रन सिर्फ उन्होंने प्रदान किए। भंडारी चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को 33 रनों पर रोक कर रखा। अब 34 रनों का लक्ष्य इस वक्त मोहन थंडर्स के सामने और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल गेंद के लिए इस वक्त तलाश जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है और गेंदबाज इस वक्त गेंद को तराशने के बाद एक बार फिर से गेंदबाजी पर तैयार आतिफ। अंपायर गेंद को इस वक्त पूछ कर सही करने के बाद इस वक्त गेंदबाज के हाथों में सौंपते हुए इस बीच गेंदबाज आतिफ दीक्षित के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा 2 कदम आगे जरूर बढ़ा लेकिन इन मौके पर इस वक्त गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड करने में सफल और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर, पहला ओवर समाप्त हो चुका। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। For the loss of 1 wicket. First over completed and now it's going to be 5 overs remaining in the innings और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का तो रन इस वक्त चाहिए 30 रन चाहिए इस वक्त। 5 ओवर का खेल बाकी और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए जहां तक सवाल है किरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त बल्लेबाज रवि। तो पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था इस वक्त मंजुनाथ ने, आतिफ ने 4 रन सिर्फ पतर करने में सफल और इस बीच किरण अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि सामना करने के लिए तैयार रवि पटायूर सामना करते हुए किरण की गेंदों का। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। 5 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए बल्लेबाज मोहन थंडर्स के और जहां तक सवाल है
5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। किरण अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया इस वक्त इनटू द स्टेज और 2 रन 1 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। गेंद को इस वक्त उछाला था ऑफ द टॉस। जहां तक सवाल है, रवि और दीक्षित इस वक्त जान चुके हैं एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप इस वक्त उन्हें निभानी है और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है अब 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। 22 चौके और 16 छक्के अब तक लग चुके हैं इस श्रृंखला में। किरण की गेंद है, ये गेंद आफ्टर दैट वन क्लियरिंग द इनफील्ड। आतिफ गेंद का पीछा करते हुए और जब तक गेंद को फील्ड करके वो थ्रो करे, बेहतरीन फील्डिंग के जरिए बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। जैसे ही रवि ने गेंद को उछालने की कोशिश की थी, आतिफ ने पीछे की ओर दौड़ना शुरू किया और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जजमेंट के साथ दौड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गेंदबाज इस वक्त किरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए दीक्षित और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद इस वक्त वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर और किरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेला जरूर, गेंद पहुंची इस वक्त सीले मिड ऑन की दिशा में। आतिफ बेहतर फील्डिंग उस वक्त, बेहतर थ्रो जरूर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। बेहतर रनिंग, बेहतर इस वक्त पिकअप था आतिफ का। देखिए किस तरीके से गेंद को बेहतरीन तरीके से पिक करते हुए तुरंत अपने हाथों से रिलीज किया इस वक्त स्ट्राइक एंड की ओर और इससे पहले बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके थे। 8 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। किरण 10 रन बन चुके हैं, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच अगली गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा, 11 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और इस ओवर में अंतिम बार किरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दीक्षित के लिए। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। In fact, it just got a single, and with that single run, the scoreboard moving up to 12 for the loss of 1 wicket after the completion of 2 overs scored by Mohan Thunders, chasing the victory target of 34 in 6 overs. Now the equation stands 22 runs to get from remaining 24 deliveries. निश्चित रूप से सिर्फ आक्रामक स्ट्रोक खेलना ही बल्लेबाजी नहीं कहलाता है, चतुरता के साथ तक खेलना निस्संदेह एक बेहतर बल्लेबाजी कहलाती है मैच के हर मोड़ पर। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त एक बेहतर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जरूरत है इस वक्त मोहन थंडर्स के क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज रवि और दीक्षित को। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो भंडारी चैलेंजर्स के गेंदबाज को चाहिए इन बचे हुए 4 ओवर में घातक गेंदबाज, खासकर इस जोड़ी को उन्हें इस वक्त तोड़ना होगा और जितने जल्द से जल्द इस जोड़ी को वो तोड़ेंगे उतना उनकी टीम के लिए बेहतर होगा। और बातचीत के बाद एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए संदीप ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बारह रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता है और संदीप इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार। इस बीच पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा। 1+1 2 runs now added to the total, and with that couple run the scoreboard moving up to 14 for the loss of 1 wicket. और जहां तक सवाल है इस वक्त रवि जो कि सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज संदीप इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ठीक 20 रनों के और दरकार बचे हुए 24 गेंदों में। और रवि इस वक्त सामना करते हुए संदीप की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट कट करना चाहा, बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग इस वक्त तरतीब द्वारा, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित यहाँ पर। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अंपायर जो कि विकेटों को सही करते हुए खेले, जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है।
एलिमिनेटर मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट कद्री प्रीमियर लीग सीजन 11 2026 के तहत यहाँ पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया कद्री क्रिकेटर्स क्लब रजिस्टर्ड कद्री मैंगलोर ने। और संदीप इस भी तैयार है। यह गेंद इस बार कट कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंचे पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल विद अ सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रवि और दीक्षित क्रीज पर मौजूद है। दोनों बल्लेबाज इस वक्त जा चुके हैं क्रीज पर। इस वक्त उन्हें टिकना है और एक बेहतर साझेदारी अपनी टीम के लिए निभानी है। और संदीप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ से बाहर की ओर निकलते हुए खराब गेंदबाजी इस वक्त। जब हर गेंद पर लगभग रन बॉल की जरूरत हो तो आपको इस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर करनी नहीं चाहिए जो इस वक्त गेंदबाज संदीप ने की है। 2 फॉर आउट साथ ही ऑफ सबसे काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। 15 रनों पर चिप किया इस वक्त गेंदबाज के सिर के ऊपर से, लेकिन फीडर मौजूद मिड ऑन पर जस्ट सिंगल रिकॉर्ड और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है जहां तक मोहन थंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए। और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद चिप किया ऑफ द टोज इनटू द रूफ और इस वक्त 2 रन घोषित अंपायर द्वारा। गेंद को इस वक्त उछाल दिया था खूबसूरती के साथ 2 रनों के लिए और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 20 रनों पर। धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ यहाँ पर मोहन थंडर्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाज का तो इस वक्त गेंदबाज को विकेटों की सख्त जरूरत है। एक बार फिर से गेंद को ऑन साइड पर उछाल दिया, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया। सेंसेबल क्रिकेट इस वक्त अपनाते हुए गेंद जिस दिशा में आई उसी दिशा में बल्ले को अड़ाते हुए गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। कवर पॉइंट फीडर के हाथों में और 1 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। 3 ओवर की समाप्ति। 10 runs came from this over and a good over came shown in Mohan Thunder's point of view. 3 gone and after 3 overs. Now I must say Mohan Thunder's looking in a good situation. It's 22 for 1 after completion of 3 overs. 12 runs to get from remaining 18 deliveries. 12 गेंदें बाकी, अब 12 रन चाहिए, 18 गेंदें बाकी। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज आतिफ ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अंपायर कुछ इशारा करते हुए इस वक्त शायद पानी पीना चाहते हैं इस वक्त बल्लेबाज, तो इस वक्त वो पानी ग्रहण करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका। सिर्फ 12 रन चाहिए 3 ओवर के खेल में और इक्वेशन इस वक्त जहां तक सवाल है इट सीम्स टू बी मच इजियर फॉर द बैटिंग साइड इन दिस सिचुएशन फॉर मोहन थंडर्स। और कमबैक कर रहा है भंडारी चैलेंजर्स के गेंदबाजों को, तो इस वक्त एक घातक गेंदबाजी की उन्हें सख्त जरूरत है और गेंदबाज आतिफ उस घातक गेंदबाजी की तलाश में अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट फर्स्ट बॉल और साथ ही ऑफ स्टंप पैरों पर टकराई प्लम्ब इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। दिस इज एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट गिवन बाय द अंपायर और ऐसा कहना पड़ेगा रवि इस वक्त गेंद को साइड पर मोड़ना चाहते थे और यहाँ पर देखिए गेंद किस तरीके से उनके बैक लेग पर टकराई और प्लम्ब इन फ्रंट सही तरीके से घोषित करते हुए अंपायर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। The man dismissed is Ravi Salian. The second wicket gone 22 for 2 now. Now equation stands 12 to get from remaining 17 deliveries. और रवि जो सेंसिबल बल्लेबाजी अपना रहे थे इस बार गेंद को हल्के से ऑन साइड पर मोड़ना चाहता लेकिन गेंद कुछ ज्यादा टर्न लेती हुई सीधे पहुंची उनके पैरों पर टकराई और जहां तक सवाल है इस वक्त विकेट का तो विकेट यहां पर गिर चुका है। स्कोर इस वक्त रुक चुका है जहां तक सवाल है 22 रनों पर। न्यूमैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज आतिफ की गेंदों का। रात के 9:45 मिनट बज चुके हैं। फ्लडलाइट्स की रोशनी मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है और घने अंधेरे को चीर कर इस वक्त रोशनी मैदान पर गिरती हुई इस मैदान को और प्रकाशमय यहाँ पर बनाते हुए और यहाँ पर एलिमिनेटर मैच इस दौर का यहाँ पर खेला जाता है और गेंदबाज आतिफ इस वक्त गेंदबाजी फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पवन नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। निस्संदेह चंद और विकेटों की जरूरत है यहाँ पर कमबैक करने के लिए भंडारी चैलेंजर्स के गेंदबाजों को। 12 रन चाहिए 17 गेंदों में इस वक्त मोहन थंडर्स के लिए और आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार मोड़ना चाहा विकेट कीपर चूके गेंद पहुंची इस वक्त
पॉइंट पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन पाई के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ। रन इस वक्त चाहिए मोहन थंडर्स के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और इस बीच 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल और गेंदबाज आतिफ अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर विकेट, बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेला बैक टू द बॉल की दिशा में, निशाना चूक चुका है। डायरेक्ट हिट इस वक्त निस्संदेह बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखा सकता था, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज ओवरथ्रो के रूप में यहाँ पर दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, निशाना दागा था इस वक्त आतिफ ने, लेकिन उनका निशाना चूका और ओवरथ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 25 1 लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर और 25 रनों पर पहुंच चुका है स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द बैट, इज गॉट अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 26 on the board. Now just 8 to get for victory in remaining 14 deliveries. निस्संदेह घातक गेंदबाजी की जरूरत इस वक्त कम बैक करने के लिए गेंदबाजों को इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। Just tap the ball in front of the long off fielder and gone through for a quick single and get it comfortably at last. 27 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Still 1 ball left in this over. Just 7 to get. Atif इस बार ड्राइव कर दिया, just got to the right of the pitch of that ball, driven that one down to extra cover. In fact they're looking for this second but won't get it. और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। couple of runs added to the total. Good running between the wicket between दीक्षित और पवन और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर। 29 for the loss of 2 wicket. Over number 4 has been games to end. Now equation stands just 5 to get for victory in remaining 2 deliveries. Like 1 run rate straight away coming down to exactly 2.5 runs per over in this situation. और गेंदबाज इस वक्त तैयार ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद को मोड़ना चाहा इस वक्त, चूंकि विकेट कीपर मिसअंडरस्टैंडिंग और इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े, डायरेक्ट हिट इस वक्त और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत विकेट गिर चुका है। पहले दौड़े थे नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज, देखिए यहाँ पर गेंद विकेट कीपर के हाथों से जैसे ही छूटी बल्लेबाज ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन स्ट्राइकर के बल्लेबाज दौड़े काफी देरी से और विकेट कीपर का थ्रो सीधे स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ। 1 more wicket fall on now the 3rd wicket down. तीसरा विकेट जरूर गिर चुका है, लेकिन दीक्षित एक छोर पर मौजूद। द फैंटास्टिक इनिंग्स कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम दीक्षित इज बैटिंग ऑन 15 इंक्लूडिंग 4 कपल्स एंड 7 सिंगल्स। और जब तक दीक्षित क्रीज पर मौजूद है मोहन थंडर्स के विजय की उम्मीदें बरकरार रहेंगे। 11 गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए विजय के लिए। इस मैच के विजेता टीम का मुकाबला होगा गोकुल टाइगर्स के साथ क्वालिफायर मैच नंबर 2 में, और वो क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस मैच के तुरंत बाद यहाँ पर खेला जाएगा। और इस बीच इमरान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को स्कूप कर दिया इस वक्त मिड विकेट पर 1 रन के लिए। 1 रन के लिए नहीं, 2 रन के लिए इस वक्त घोषित कर चुका है कि इस वक्त छत पर जा चुके थे ऑन द टॉप ऑफ द रूफ और 2 रन 31 3 to get from 10 balls। और गेंदबाज इमरान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद एक बार फिर से ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, अगेन he's got a couple and with that couple run the scores are now leveled. Just 1 run needed in remaining 9 balls। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, ऑफ द टॉस, that's it। Mohan Thunders this time they gone through a quick single and Mohan Thunders qualify for the qualifier match number 2 of this competition, defeating Bhandari Challengers by 7 wickets with 8 balls to spare. And with that victory, they are through to the qualifier number 2 of this competition. Now the qualifier match number 2 will be played between Gokul Tigers versus Mohan Thunders, and that qualifier match number 2 will coming up live is now coming up live exclusively right in front of you within just within right after the 5 minutes break. So qualifier match number 2 is now going to play between Mohan Thunders versus Gokul Tigers. That match starts within just short while. तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। और मैराथन मैच के जहां तक सवाल है, 20 runs scored by Dikshit and he remained unbeaten at last, and because of that his unbeaten knock of 20 runs. Dikshit of Mohan Thunders adjudged man of the match for his fantastic knock of unbeaten 20 runs. I request Dikshit please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests.
and also he picked up 1 wicket in his bowling, and because of this all-rounding performance, 1 wicket and unbeaten 20 runs, Dikshit of Mohan Thunders adjudged man of the match. So that's it for the match number eliminated match, and now the qualifier match number 2 is now going to start between Gokul Tigers versus Mohan Thunders, and that match starts right after a 5 minutes break. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು So that's it. ಸಾಲಿಯನ್ನವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So that's it. Qualifier match number 2 is now going to start right after the short break. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर क्वालिफायर मैच नंबर 2 शुरू होगा मोहन थंडर्स और गोकुल टाइगर्स के बीच. तो अब वक्त एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. I request the captains of Gokul Tigers please to be reported here. I request that all the players of Gokul Tigers please report to the stage immediately for the toss procedure, for the signature procedure in fact. ಹಲೋ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಮೋಹನ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಕುಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇದರ ಕದ್ರಿ ಇದರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಟವಲ್ ಹಾಕಿ ದೀಪಕ್ ಇವರು Welcome back. I request captain of Gokul Tigers as well as Mohan Tanders, please be reported here immediately. Mohan Tandar ಹಾಗೆ ಗೋಕುಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಗೋಕುಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಹನ್ ತಂಡರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕಿಗೆ. ಗೋಕುಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಹನ್ ತಂಡರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. So welcome back once again. I request the captain of Mohan Tandar as well as Gokul Tigers kindly request you to please report immediately for the tossing ceremony. And this is going to be one of the most high voltage match of the final day of this cricket tournament. The qualifier number 2 and a must win match for both the team, and wait and see which team will go into hand the pressure in the big. ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಭಂಡಾರಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಭಂಡಾರಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಡವಲೆ. ಇಮ್ರಾನ್
So welcome back for the most important match, qualifier number 2 of the prestigious Kadri Premier League 2026 season 11 by Kadri Cricketers Club registered Kadri Mangalore. Winning the toss, captain of Gokul Tigers, they elected to ball first against the team against Mohan Thunder, and well, it's going to be a very important match for both the teams. You know exactly after they played a very good game of cricket throughout the 2 days, 2-day night of cricket tournament. The job which is not yet over for both the teams. They wanted to be in the finals. They have to give 100% in this game because this is not the league stage matches. There is no excuse at all in this the big match. You have to perform if you wanted to be in the finals of this prestigious KPL. The dream of each and every team is absolutely to become the champion, but at last the 3 teams already they are looking to make their dreams come true, and of course, and winning the toss might be the good toss to win here for the team Mohan Thunder. There are no hesitation at all from the mind of captain that he wanted to ball first, and Chetan brought in to attack the ball the first over. Dikshit, the man, is in the strikers, and Manju will be the non-striker, the man of the match of the previous match, the Eliminator. He wanted to continue his form in this match as well. Wait and see. Here comes Chetan. First ball, past the umpire Pushparaj. Right number over the gate. Oh, what a dream start. Absolutely a ripper from the bowler Chetan. Unplayable delivery. If when the batsman is facing his first delivery and he is getting such kind of delivery, of course, I'm sorry for that. It's unplayable, beautiful leg cutter there from Chetan. This is what the Chetan wanted to get the start here for his team. After winning the toss, he need to justify the addition of his captain. And the cheer boy is absolutely excited. And is the biggest supporter of the team Mohan Thunder maybe, but I don't know. Every time he's cheering, but I'm very confusion which team is supporting. So what a wonderful delivery, isn't it? The Chetan produced absolutely Jaffa. A shackling start here for the team Mohan Thunder. The first ball itself is right on the money from Chetan. 1 wicket gone, yet to open the account in the scoreboard. The new batter in, the key player for the side, Ravi Salyan Padayuru. We're going to face second delivery of Chetan. This time catch it is a call, but just ball has got a little bit passing the extra cow fielder down to deep extra cow region for a single. Ravi off the mark. Definitely whenever you're getting a first run by facing your first delivery, it's give a lot of confidence for the batter. 1 for 1. Chetan. Manjunath appeal for leg before wicket. Hitting him maybe outside the line of the leg stump, and leg by call by umpire. Chetan is very much confident, but not the umpire. 2 for 1. The good start here from a young man. The umpire always observing the turn of the ball, how much the ball is going to travel. Oh my goodness! Almost the wicket number 2 here for Chetan there. It's not far away from the off stump. The ball is missed the stump by Whisker. Excellent start here from the bowler. What a great start. 3 fantastic deliveries to start with. It's 2 for 1. Down the leg side. This is something what Chetan not to do when he's bowling such a great line and length. The ball batter is in a tremendous pressure. If he bowls a wide, the pressure is off from the batter. 3 for 1. Need to reball that. Chetan. And this time again is going to be experiment. I am not thinking that going to be experiment. Maybe the ball just slipped out of his hand because of wet hands. It is very sometimes difficult for the bowler to, especially for the spin bowler.
They're using their fingers. Sometimes it's not so easy to grip proper. Bowled him. No, I think he's gone. He's gone. Absolutely gone. Will it go into leg before wicket or bowled out? I just have a confusion. It's a leg before wicket. He's absolutely flum in front of wicket. He's finding himself right in front of stump. This is the battle between jersey number 10. Chetan is also wearing jersey number 10. Ravi is also wearing a jersey number 10. But the bowler, the absolutely bowled up. Fantastic delivery again to dismiss the danger man Ravi. What a start there from Chetan. After he bowled the two wide deliveries, then Ravi is not really expecting that ball from him. He played a wrong line. In fact, I want to tell you, of course, the ball which is very good, delivery with the line is so good, but batter is making a mistake that he just wanted to play the wrong line. He just pays the penalty for that. It's 4 for 2. Oh, that was a fantastic take there from cameraman. He is so much excited to watch that man. And again, around the legs of the batter, fantastic start here from the bowler Chetan. The first over completed. Some very good steps you can see there from Chio Boy. Absolutely fantastic. Have a look at the body movement. It's 4 for 2. Sai Sant is a new batter in, came into bat. Gokul Tigers winning the toss, selected to ball first. And Chetan is produced a dream start for his team with the 2 wickets for just 4 runs. But needed some consistency in bowling. After Chetan with the jersey number 10, we completed the over. Another jersey number 10, Ritesh, came into ball here. So everyone wanted to become a Sachin Tendulkar, isn't it? It's 4 for 2. Over number 2 will going to start here. Oh, my goodness! How he's bowled that delivery for the big man. Absolutely, you get no clue whatsoever. Beautiful delivery, unplayable one. What a delivery that from Ritesh. Just have a look at it in replay. How quickly he came into the bat. It's a quicker one. The fantastic bowling performance here from Mitesh. 3 gone. It's 4 for 3. All in sudden Mohan Thunders. They're looking in more trouble. Never looks like it's going to be a cricket scoreboard. It's definitely looks like a kabaddi scoreboard. 4-3. Lost 3 wickets for just 4 runs. There's a competition between run and the wicket here. Ritesh, what an outstanding delivery. Just like how Dikshit is received by the first delivery, the golden delivery from the bowler in the first over by Chetan. Similar in this second over, the identical mirror display of the previous over. Once again, lovely delivery, negotiated very well by the batter. Again, the ball is hurried on to the batter, sharply coming into the batter. The man is very well. The last moment, just number 28. Pawan off the mark with a single. Confident start from him. 5 for 3. The over number 2 is in progress. Sai Sant. Oh my goodness, the middle fielder. He's lost his balance. He's off balance. Definitely it's going to be wicket number 2 for Ritesh. Maybe he's made some kind of urgency here from Nagendra. Definitely opportunities missed out by the fielder, no doubt at all. The batter Sai Santu, they're dealing with some luck. Wait and see how we're going to grab this opportunity. 6 for 3 in the over number 2 is in progress. Gokul Tigers. The Tigers are roaring from the ball here. Really, they have to say thanks for that luck which is in the previous delivery of Ritesh. Again, what a delivery. Ritesh has been outstanding, isn't it? After that, he bowled 2 very good deliveries into the stump, and this one is a different one. Outgoing delivery, outswing delivery. Effectively bowled.
6 for 3. Oh my goodness, one more fantastic delivery. Really, they're firing here, isn't it? The bowlers of team Gokul Tigers. They're absolutely roaring from the ball, just like a Tigers. It's 6 for 3. Last time in this over, Ritesh right arm over the wicket balls. Ready straight to answer mid wicket, misfield over the field. One more addition to total 7 for 3. One more fantastic over which comes to an end here from the bowler of Gokul Tigers. The good over flare from Ritesh, the little master. Don't judge the book by its cover, just like how Pushparaj BM always is one of his favorite word. Especially the little master. You can see there he's saying that one more little master is coming to bowl here. Pratap is absolutely one more example to say that don't judge the book by its cover. It's 7 for 3. Pratap brought into attack. One more excellent all-rounder. Starts with the delivery which is across the line. Played by Pawan down to square leg region for a single. Quite dangerously played. Against the turn of the Pratap, who got a potential of bowling both in and outgoing deliveries. Down the leg side is going to be a wide. One more extra with the addition of that extra scope, but moves on to 9 for 3. Wide call by umpire Pushparaj. Again to the Sam Santosh wants a single. Pawan is also starts. But they're going against the run. No, exactly. They needed some partnership here. Mohan Tandon need to be cool and calm sometime. They have to respect the condition of the game. Again, once again, lack of placement. Again, Santosh wanted to get the placement. They played it straight to dancer field. Yes, we are watching in the screen the president of Padav Friends Yateen in the screen. They're watching the live telecast of the cricket tournament. Welcome, sir, for this prestigious KPL. This time, couple of runs, and Sai Santu quickly realizing that if you are not able to get the runs in the play of course, by playing orthodox cricketing stroke, just why not we need to get some unorthodox cricketing stroke. Again, wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. All we can see that dignitaries in the main stage enjoying the game of cricket. The over number 3. One ball remaining in this over as per manual scoring, as per online scoring. First ball single, second ball wide, third ball of course dot, third ball dot, fourth ball double, fifth ball dot. ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯತೀನ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. Yes, some confusion because of yes. Sorry for that. The over which is completed. Yatin has been welcomed with the shawl and memento from Kadri cricketers registered. Again, a lovely delivery, beautiful leg cutter. ರಾಜೇಶ್ ಗುಲಾಲ್ ಇವರಿಗೆ
The Chetan brought into attack is just continuing what he left in the first over here also. Starts with a beautiful delivery. Oh, this time tipped it away into the deep extra cover region. One more single. Quite deliberately Pawan chipped it away. You know exactly now it's a need to get some runs here. The Mohan Thunder. It's 12 for 3 in the over number 4 is in progress. Chetan bowls. Lovely shot, but set to dance a fielder at extra cover. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. Even is not giving any power in that stroke. Just have a look at it in a replay. The flighted delivery off volley, wide outside the line of off number, and you can see that Santosh just played it. He's not giving any power in that stroke. If he get his little bit power behind the stroke, that will definitely going to be a huge one. Once again, Cheer Boy is in action, celebrating the wicket of Sai Santu, the fielder in the deep extra cover region. That takes a catch, wonderful catch. Some lovely steps you can see here from our Cheer Boy. He's absolutely enjoying. Thank you. It's 12 for 4. Right arm over the kitty balls. Wanted to go for the big one, missed it completely. It's not so easy condition for any batter to come and throw your bat. You need to get your eye in. You have to spend the time a little bit. You need to be very sensible. The patience is key to everything. This time switch comes into play. Played it very nicely into the deep back point region. They wanted to come back for the second, and they made it quite easily in the end. Tilak, the experienced man, you know exactly this team is needed some runs. This team is needed some partnership. 14 for the loss of 4 wicket. Chetan to continue, right arm. Chetan to continue with a short run up. And some exciting faces we can see here observing the game. Lovely delivery to finish the over number 4. Searching for the right track again. Mohan Thunders are looking in trouble. It's 14 for 4. Last couple of overs remaining for the innings of Mohan Thunder. Oh, they are the best friends. Ye dosti hum nahi chodenge. Absolutely. The three of them enjoy the game of cricket here. Maybe they are volunteers of Kadri Cricketers Club registered. They are enjoying here. They know exactly the cameraman is focusing him. They are watching with the LED screen. Nagendra brought into attack to bowl the 5th over. Played it nicely into the point region. Quick work done by the fielder. Direct hit. It's gone. What a fantastic work done by the fielder. Unbelievable work. Just a backhand flick into the stump. The batter is not in the position. Just have a look and replay. Place the ball. The extra cover fielder running in. And have a look at that flick. Absolutely fantastic. Directly hits the stumps. And easy decision there from Pushparaj. When the ball hits the stump, he is not in the frame. Excellent work, isn't it? Just have a look at the flick of the wrist there from the fielder. Prakash, fielder at short extra cover, did a wonderful job. It's a family time to come and watch this prestigious tournament. Absolutely, they are really enjoying here. Why not? There's such a wonderful cricket tournament here. And of course they are taking some the pictures, collecting some beautiful moments here in this beautiful cricket ground. Umpires review for the wide decision because the bowler came right in front of umpires, so that we wanted to check that wide, whether it's going to be wide or not. Let's wait and see.
very interesting to see that the cameraman is very much interested to focus the family here as very happy family. And just have a look at that one in replay. Will it going to be wide or not? Nagendra balls the delivery. We can see that he's coming right in front of umpire, isn't it? And very difficult for umpire to watch. Just have a look at that one. His follow through. This came right in front of umpire. The wait and see that line of the ball, whether it is going to be a fair delivery or wide delivery. Umpire Sriraj will going to watch very closely. The cameraman will going to provide some angles. The technician will going to give this angles, and wide which is confirmed. It's a wide from the third umpire as well. So one more extra. The bonus run for the team Mohan Thunder. It's 15 for 5. Nagendra to continue. Switch it up in the air. Opportunity for the fielder. Mitesh is underneath it. He's not missing the opportunity here. One of the safest pair of hands in the deep. The one more wicket back in the pavilion. Just have a look at the replay. They wanted to go for the expansive drive. Tilak, exactly steam. He needed some runs, but he played it very high and just faced the penalty for that. Nagendra strikes for one more wicket for his team. The Ritesh is the fielder, is making no mistake at all in the deep. Fielder. 15 for 5. 15 for 6 in fact. The Mohan Thunder is not a kind of performance when you are playing a qualifier number 2. But Gokul Tigers, all we can see that they really become tigers here with the ball. Chetu is a new batter in. This came into middle with a lot of responsibility in his shoulder. The team is needed runs in the remaining 10 deliveries of their innings. Lovely shot. Maybe the fielder at square leg is got a hand onto that. Powerfully struck by Chetu. One more addition to total with that single scope and moves on to 16 for 6. Very hard to combine the runs. Each and every run they are battling hard. Only because of the bowlers absolutely did a fantastic job with a great line and length. Nagendra to continue to the left-hand batter, the young Nazil. Swept it, tested, that's a fielder. Everything is going in favor of the fielding team. Just like what you call in Kannada, Muttidella Chinna. Just like everything is going on. Everything the batters hitting the ball is going to the hands of the fielder. The wicket number 7 gone. Nazil swept it very well, but he's not really able to keep it down. And Sujit the fielder at deep square leg division, making no mistake at all. 16 for 7, Mohan Thunders. Absolutely is struggling against the bowling of the team Gokul Tigers. Nagendra picked up a 2. What a tournament he's having from the ball. Daksh, the new batter in. They came into middle as a number 10 batter for the side. Nagendra will going to continue here. Against the line, appeal for leg before wicket, but ball hitting him outside the line. Even leg by call by umpire. One more addition to total. 17 for 7. Now, Chetu, experienced man in front of Nagendra. Down the leg side, but well within the reach of the batter. One more over completed, 5 gone. After completion of 5 overs, Mohan Thunder are 17 for 7. Absolutely tortoise walk here from the batters of Mohan Thunder. The fails to get the partnership. The fails to rotate the strike. Top order batsman fails. Only because of the opening bowlers Chetan and Ritesh got a very good start from the ball, dismantling the batting department of their opposition with the bowling. This is what the kind of commitment, the body language required when you're playing a big match.
extra bounce in the dedication for Sujit. Bowling the last over. First ball, 1 run. And with that single score, Banda moves on to 18 for 7. Last 5 balls remaining. Sujit so far did a good job in the bowling department. Now we are talking about did a good job here, but it's not a good job here. Bowled wide outside the line of off stump, and one more addition to total bonus run for the team Mohan Thunder. They will going to enjoy each and every extra. Beautiful shot, lofted that one into the deep mid wicket for just for a couple of runs. Couple of runs, right? So the couple of runs they added to total 21 for 7. Once again top edge, and top edge will going to get him for a couple of runs again. So this is all the important runs came from the bat of Chetu. You know exactly his team is desperately required runs here, but Sujit is bowling short pitch deliveries regularly. Not learning from the mistake here. 5 runs already came from this over with a couple of twos. Once again, the short pitch delivery played it down to square leg region. Chance of run out in the Striker's end, but the fielder is not quick enough to make the run out. Daksh completes. Chetu picked up a single and score but moves on to 24 for loss of 7 wicket in the over number last is in progress. A couple of deliveries left in this over. Sujit to continue to Daksh. This time again opportunity for Sujit himself to take the cotton ball, and he comfortably taken. The wicket number 8 gone. It's 24 for 8. And the played it up easily in the air, and Sujit is making no mistake at all. The last ball remaining in the innings of Mohan Thunder. Number 10 batter is walking towards the middle with the number 9 jersey. Dikshit will be the 10th batter. Last ball remaining. Wait and see how we'll going to contribute from the bat in this final debut of the innings. Oh my goodness, can you believe this? Sujit bowled once again a wide +1. A couple of runs, the gifted runs, 26 for 8. This is turning over the first better over for the point of Mohan Thunder. Point of view of Mohan Thunder. Suji conceded 8 runs and now 9 runs. 27 for 8. Highly indisciplined bowling performance. 10 runs came from this over already. Loft it! What a finishing touch here from Chetu. He played a very good innings. A small cameo from him. Then very useful for the team Mohan Thunder to get into that competitive total of 30 runs and 29 runs in fact, and 30 runs required for the victory in 6 overs, and exactly the 5 runs per over the required run rate for the team Gokul Tigers to qualify for the mega final. And it's going to be very interesting. The second session don't go away. Even the 30 seems to be small target, but if Mohan Thunders will go into ball well, they can make this total target a little bit tougher for the team Gokul Tigers. But Gokul Tigers, every bowler did a great job except one over, the last over, which is expensive. Otherwise the bowlers did a wonderful job for Mohan Thunder to restrict their opposition for just 29 runs. 30 is a target. We'll take a short break in commentary box. After a short break, once again my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you.
I request the openers please go for bat immediately. Dhanyawad Satish. So what a fantastic bowling performance given by the bowlers of Gokul Tigers, and because of that they restricted the batsmen of Mohan Thunders for 29 runs. Thanks to the last over which cost 12 runs, and because of that Mohan Thunders finished respectively with 29 runs, and now the target is exactly 30 for them, and their innings now going to start. और अंतिम ओवर में 12 runs scored from the last over from Sujit, and because of that Mohan Thunders finished respectively with 29 for the loss of 8 wickets in their simulated 6 overs. And now the target for Gokul Tigers is exactly 30. They have to score for victory in their simulated exactly 6 overs to qualify for the grand finale of this competition to face Alwa Super Kings. और उनके पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार मंजुनाथ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए चेतन और रतीश आरंभिक बल्लेबाज, और इस वक्त चेतन सामना करने के लिए तैयार। मंजुनाथ बाएं हाथ ऊपर दबे के इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रतीश के लिए। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है 36 गेंदों में 30 रन इस वक्त बनाने इस क्वालिफायर मैच नंबर 2 के तहत। और गेंदबाज मंजुनाथ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार सामना करते हुए बल्लेबाज बाएं हाथ के। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को कट करना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी मंजुनाथ की, कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई। 2 बेहतर गेंदे गेंदबाज मंजुनाथ इस वक्त फेंक चुके, और चेतन इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, इस वक्त कुछ ज्यादा ऊंची पैरों पर टकराती है। इट्स द बॉल स्टक टू हिज leg too high, and because of that umpire ruled it a not out, and 1 run added to the total in the face of leg by। और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है गोकुल टाइगर्स का। 1 रन बिना किसी नुकसान के, और मंजुनाथ इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए इस वक्त रितीश 3 बेहतर गेंदे इस ओवर में गेंदबाज मंजुनाथ यहाँ पर फेंक चुके हैं, और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट केपीएल कदरी प्रीमियर लीग सीजन 11 2026 के तहत यहाँ पर खेला जाता हुआ। और मंजुनाथ अगली गेंद लेकर तैयार, बेहतर गेंद इस वक्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, kept over at the last moment and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run, and the scoreboard stays at 1 without loss in the over number first in progress। और रतीश इस वक्त सामना करते हुए मंजुनाथ की गेंदों का। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को चलना था, प्लम्ब इन फ्रंट गिवन, रतीश द मैन डिपार्ट्स। पहला विकेट गिर चुका है इस वक्त, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, स्टंप्स को कुछ हद तक कवर करते हुए गेंद उनके पैरों पर टकराई, जोरदार अपील हुई, और अंपायर इस वक्त रतीश को आउट यहाँ पर घोषित करते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। मंजुनाथ की गेंद थी इस वक्त, गेंद इस पर बैक लेग पर टकराई अंतिम क्षण में, और आखिरकार बल्लेबाज को आउट इस वक्त घोषित कर चुके हैं अंपायर। पहला विकेट गिर चुका है प्लम्ब इन फ्रंट के रूप में, रतीश पिपलिन वापस लौटते हुए रितेश कहना पड़ेगा, और पहला विकेट गिर चुका। तो एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में मंजुनाथ इस वक्त दे चुके हैं, और ऐसा कहना पड़ेगा गोकुल टाइगर्स अपना पहला विकेट खो चुका है 1 रन के ऊपर। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, रितेश द मैन डिपार्ट्स। प्रताप इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो मंजुनाथ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 5 बेहतर गेंदे इस ओवर में मंजुनाथ फेंक चुके हैं, और अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मंजू की गेंदों का बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद प्रताप, फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिसमिसल फॉर प्रताप। दिस इज एन एब्सोल्युटली बिग ब्रेक थ्रू
for the Manjunath and for his team. This is an outstanding delivery. First ball golden duck dismissal. और रिप्ले पर मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से विकेट गिरा था. मंजुनाथ की गेंद थी इस वक्त. देखिए क्रीज के कोने से इस गेंद को उन्होंने फेंकी थी और गेंद इस वक्त अंतिम क्षण में गेंद को खेलना चाहा. गेटिंग इज इनसाइड इट, जस्ट ट्रैक्ड onto the stumps at the last moment. और प्रताप का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है. Is backing to pavilion. Have a look at this in the replay. Much straighter line. Getting his inside of the bat. And after being getting inside of the bat, the ball stuck to his middle leg stump. Bills disturbed. First wicket gone. Second wicket gone, in fact. 1 for 2. They are looking in trouble. 1 for the loss of 2 wicket. And a big breakthrough for Mohan Thunders now. Which given by Manjunath in the first over. And after completion of first over, a fantastic over came to an from Manjunath, who conceded just a single in this over and picked up 2 wickets. Because of that, this is an absolutely not a good start for the batting side. Gokul Tigers, 1 for the loss of 2 wickets after completion of first over. And now the man is now comes out to the middle in this critical circumstances. Chetan, जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद. प्रकाश का आगमन हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दीक्षित. एक बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी में इस वक्त गेंदबाज मंजुनाथ दे चुके हैं यहाँ पर मोहन थंडर्स के लिए. और गोकुल टाइगर्स के लिए पहले ओवर में सिर्फ एकमात्र रन उनके बल्लेबाज जोड़ने के बाद दोनों बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं. रितेश और खासकर प्रताप, जिनका बहुत ही बड़ा विकेट, बेशकीमती विकेट इस वक्त गिर चुका है गोल्डन डक के रूप में. मंजुनाथ की गेंद पर बोल्ड आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए. और इस बीच अगली ओवर की पहली गेंद लेकर दीक्षित इस वक्त तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज चेतन इस वक्त सामना करते हुए. और ये गेंद इस बार गेंद को साइड पर मोड़ दिया. बेहतर फील्डिंग, फैंटास्टिक वर्क मेड बाय द मिड विकेट फील्डर. दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट पीस ऑफ फील्डिंग मेड बाय द मिड विकेट फील्डर. अपनी बाईं और डाइविंग लगाते हुए गेंद को इस वक्त रोकने में सफल. और दूसरे खिलाड़ी उनके टीम की उनकी सराहना यहाँ पर करती है. देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था. और यहाँ पर जहां तक सवाल है, थ्रो भी किया और थ्रो इस वक्त रन आउट हो चुका है मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत. दिस इज मैग्निफिसेंट पीस ऑफ फील्डिंग. और ऐसे फील्डिंग निश्चित रूप से मैच की दिशा को बदलने में काफी हद तक सहकारी होते हैं. देखिए यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़ आए थे स्ट्राइकर एंड पर और रन आउट आसानी के साथ इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर तीसरा विकेट गिर चुका. दिस इज एन एब्सोल्युटली शैकलिंग स्टार्ट फॉर द बैटिंग साइड. Gokul Tigers really struggling out in the middle. It's 1 for the loss of 3 wicket. And the man Prakash dismissed because of a misunderstanding. So just have a look at this replay. This is an absolutely fantastic effort made by the fielder. घूम कर तुरंत गेंद को उन्होंने फेंका स्ट्राइकर एंड पर. आखिरकार गेंद को फील्ड करने के बाद विकेट कीपर ने थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर और आसान सा रन आउट होता है. और इसी के साथ तीसरा विकेट गिर चुका है. 1 for 3. And the bowlers of मोहन थंडर्स लुकिंग राइट ऑन टॉप इन दिस सिचुएशन. और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ. नागेंद्र द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. निश्चित रूप से इस वक्त एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाजों को. और चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. नागेंद्र की गेंद का नागेंद्र ऑफ से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए गेंद को छोड़ दिया सीधे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला लेकिन टीम को मिला वाइड के रूप में. और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दीक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. चेतन जो कि सामना करने के लिए तैयार. और इस बीच नागेंद्र नॉन स्ट्राइकर रन पर मौजूद. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हैं विकेट कीपर रवि. और जहां तक सवाल है इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ फील्डर इस वक्त बदल दिए गए. और अगली गेंद लेकर दीक्षित इस वक्त तैयार था. इन विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज चेतन के लिए ये गेंद इस बार. दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी. 1 more wicket fallen. सो बिल्स डिडंट ऐसा कहना पड़ेगा बिल्स इस वक्त नहीं गिरे हैं. तो जहां तक सवाल है गेंद स्टंप से रिफ्लेक्ट हुए थे जरूर अंतिम क्षण में लेकिन बिल्स वहां पर शायद डिसलॉर्ज नहीं हुए थे. और यहाँ पर बल्लेबाज इस गेंद पर नहीं, इस बार बिल्स गिर चुके हैं. यहाँ पर अंतिम क्षण में बिल्स गिर चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं. और यहाँ पर देखिए किस तरह की गेंद थी. गेंद हालांकि ऑप्शन को छू कर निकलते हुए और एलईडी लाइट्स जो कि रिफ्लेक्ट होते हुए बिल्स इस वक्त गिरते हुए. चौथा विकेट गिर चुका है. 4th विकेट डाउन. जस्ट 1 बिल्स रिफ्लेक्टेड एट द लास्ट मोमेंट, डिसलॉर्ज्ड एट द लास्ट मोमेंट. हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. सिर्फ एक बिल्स जो कि ऑफर मिडिल स्टंप का जो कि इस वक्त गिरता हुआ. और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर 4 इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन. चेतन द मैन डिपार्ट्स. Chetan, Ritesh, Pratap and Prakash, all are the batsmen are out for a duck. 4 ducks already
added into the account of Gokul Tigers batting department. 2 for the loss of 2 wicket. Now Dikshit and Satish, the new batsman, is now comes out to the middle. 4 रनों पर 3 विकेटों को जबकि खो चुका था मोहन थंडर, जबकि 2 रनों पर 4 विकेट खो चुका है इस वक्त यहाँ पर गोकुल टाइगर्स। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दीक्षित सतीश इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में सामना करने के लिए तैयार। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, और दीक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहता है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद हल्के से खेलना चाहा, फील्ड जरूर रन का खतरा इस बीच, लेकिन फील्डर यहाँ पर जब तक डायरेक्ट हिट सबसे पर टकरा है। एक और विकेट गिर चुका है। 1 more wicket fallen. Disaster continuing here for the batsmen of Gokul Tigers in this situation. 2 for the loss of 5 wickets. Celebrations is now going on the camp of Mohan Thunders. This is an absolutely fantastic work made by the short fine leg fielder behind the stumps. और यहाँ पर देखिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, विकेट कीपर को बीट करते हुए निकल गई, अपील जारी थी, लेकिन चतुरता के साथ इस वक्त स्टंप्स पर डायरेक्ट हिट लगाई और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। 2 for the loss of 5 wicket. This is not a good going on here for the batting side. Gokul Tigers really struggling out in the middle. It's 2 for the loss of 5 wicket in the over number 2nd in progress. विकेट ताश के पत्तों की तरह इस वक्त गिरते हुए, विकेट्स आर फॉलिंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। और हर विकेट के पतन के साथ गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, सुजीत यानी सुजी इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दीक्षित की गेंदों का 3 विकेट 3 गेंदों पर इस वक्त गिर चुके हैं, 2 विकेट रनआउट के रूप में, 1 विकेट बोल्ड के रूप में। और सुजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 30 एग्जैक्टली द 30 टारगेट और सिर्फ 2 रन बन चुके। और गेंदबाज दीक्षित इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा हो चुका। अब क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों के सामने ये मुद्दा ठहरता है कि एक बेहतर साझेदारी वो यहाँ पर निभाए, पार्टनरशिप निभाए। और 1 रन के साथ इस वक्त सतीश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और सुजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और दीक्षित एक सफल ओवर का साबित हो चुका, 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन प्रदान कर चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो दीक्षित इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार रही। है गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाह, नॉट करेंगे दैट वन प्रॉपरली। इन फैक्ट Iskan got any down for that stroke again in this delivery, and the scoreboard says a 3 for the loss of 5 wicket in the over number 2nd in progress. और इस बीच अंतिम गेंद लेकर दीक्षित इस वक्त तैयार। निश्चित रूप से एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है, जहां तक जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं। और इस ओवर के अंतिम गेंद लेकर दीक्षित इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सुजीत के लिए तैयार। ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पहुंची इस वक्त गली क्षेत्र पर और बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 4 for the loss of 5 wicket after completion of 2 overs। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, दिस इज एन एब्सोल्युटली अ शैकलिंग स्टार्ट फॉर गोकुल टाइगर्स। 30 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 4 रन जोड़ चुके हैं। पहले 2 ओवर में 5 विकेटों को खो चुका है। अंतिम ओवर में जो 12 रन प्रदान किए थे गेंदबाज सुजीत ने, वो शायद इस वक्त उनके लिए महंगे पड़ सकते हैं। अगर ऐसा कहना पड़ेगा गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाज इस मैच को 12 रन या उससे कम अंतर में हारते हैं, लेकिन इस वक्त मौका जरूर उन्हें कम बैक करने का, विजय का मौका जरूर है गोकुल टाइगर्स को। जहां तक सवाल है कि बेहतर साझेदारी ही अब गोकुल टाइगर्स को विजय की ओर अग्रसर कर सकती है। Exactly, we see that equation, of course, 4-5. But definitely it's going to be not a good scoreboard for any team when you're chasing 30 runs to win this match. And probably Gopi just coming back to this match, just like the same start. And when Mohan Thunders is batting in the middle, they are also got a shackling start. Both the bowlers, opening bowlers, Chetan and Ritesh has got a very good start from the bowling. Here is also Manjunath and again Dikshit has got a very good start from the ball. That's almost identical mirror display of the previous innings. The same start which is given by the bowler. That means Gopi, this is not a batting paradise. This is definitely going to be a bowling paradise. The bowlers absolutely dominating. But just like I mentioned about Gopi, 26 needed and remaining 24 deliveries. Still there opportunity for the team back in the game for the Gokul Tigers. बिल्कुल सतीश, और मंजुनाथ इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हैं। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और धीरे धीरे सतीश जैसे कि आपने कहा ये इस वक्त
बॉलिंग पैराडाइज के रूप में ये पिच इस वक्त परिवर्तित होता हुआ, और निश्चित रूप से जिस तरीके से इस मैच में विकेट गिरे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बल्लेबाजों को रन बनाने में कितनी दिक्कत यहाँ पर महसूस हो रही है। और कुल मिलाकर अब तक इस और वापस से इस निर्धार को लेते हुए सही गेंद घोषित, और जहां तक स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 33 रन इस मैच में बन चुके हैं और विकेट इस वक्त गिर चुके हैं 33 रन जस्ट स्कोर्ड overall in this match and 13 wickets lost, and that shows the domination of the bowlers in this match। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, गेंद वाइड का इशारा इस बार, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे गेंदबाजों के लिए सहकारी बनता हुआ यह पिच, और निश्चित रूप से बल्लेबाज काफी दिक्कतों का सामना करते हुए इस वक्त रन बनाने में इस वक्त इस पिच में यह गेंद बेहतर गेंद इस वक्त लगभग जमीन के सहारे आते हुए शॉर्ट टर्नमैन पर गेंद पहुंची, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाज के ऊपर, और मंजुनाथ जो कि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और 2 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त, गेंद हालांकि अंदर की ओर आते हुए अंतिम अक्षर में गेंद को बड़ी मुश्किल के साथ ढकेलना चाहा, ठीक तरह से गेंद को ढकेल नहीं पाया और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। जबकि तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, 3 balls bowled in this over, fantastic bowling performance continuing here from मंजुनाथ। अगली गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद को उछाल दिया इस वक्त और ऑन साइड पर गेंद जाते हुए एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 6 for the loss of 5 wicket in the over number 3 in progress। निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज यहाँ पर, और इस बीच गेंदबाज मंजुनाथ बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को एक बार फिर से मोड़ दिया, स्टेज पर गेंद जा गिरी है और 1 रन इस वक्त घोषित, जस्ट अ सिंगल डिक्लेयर्ड बाय द अंपायर एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 7 on the board for losing 5 wickets in the over number 3 in progress। Still a ball left in this over, a fantastic bowling performance continuing here from मंजुनाथ। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, अंपायर ने कहा कि जी नहीं, गेंद को छत तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती, ओवर नंबर 3 की समाप्ति, 3 gone and what a fantastic spell came from Manjunath। 2 overs 1 maiden 2 runs and he picked up 3 runs and he picked up 2 wickets। 2 overs 1 maiden 3 runs and 2 wickets, this is an outstanding figures in 7 overs format which is bowled by Manjunath। 7 रन 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति और सतीश कुछ भी नहीं बदला एज यूजुअल। द प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ गोकुल टाइगर। 7 for 5 नाउ, इक्वेशन सीम्स टू बी सफर फॉर देम, 23 to get from 18 deloys। अब सतीश ऐसा करना पड़ेगा, बल्लेबाजी में कुछ हद तक तेजी यहाँ पर लानी होगी बल्लेबाजों को। Exactly, Gopi, each and everyone is asking run rate is absolutely creeping up. 7.67 runs per over the record run rate. It might be a big ask in this condition, and because the team Gokul Tigers, they got a fantastic bowling department aside. I'm just thinking about Gopi, the last over, which is very expensive, bowled by the bowler of Mount Thunder, Suji's bowl. But Suji is still there in the middle, and he's got opportunity to make a comeback from the bat, because of course the mistake is common, but he had to come back very strongly from the batting, and we did see how well Sujit and Satish will going to get the runs in the remaining overs। बिल्कुल सतीश, पहली गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद को रोकने में सफल, काफी बेहतरीन फील्डिंग के साथ, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। फैंटास्टिक स्ट्राइक विद अ ट्विस्टेड बैट प्लेड बाय द बैट्समैन सतीश, और बेहतरीन फील्डिंग यहां पर करते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन के फील्डर पे बाईं ओर दौड़ते हुए 8 से 10 कदम गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के अंदर रोका और इस बीच 2 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल। जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया, अंतिम ओवर में सुजीत ने जो 12 रन प्रदान किए थे वो रन इस वक्त महंगे पड़ते हुए गोकुल टाइगर्स के लिए, और सुजीत इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। इस वक्त उनके सामने मौका है कि उस गलती पर इस वक्त पैच वर्क वो कर सके, और देखते हैं इस वक्त किस तरीके से वो इस गलती पर पैच वर्क कर पाते हैं। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त, गेंद को चूकी और गेंद इस वक्त शॉर्ट लेग फील्डर के हाथों में पहुंची और रन सब बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 9 for the loss of 5 wicket in the over number 4 in progress। 16 balls left in overall calculation and 21 runs more now they have to score for victory। और गेंदबाज साई संतु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सुजीत माफ कीजिए सतीश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और इस बीच साई संतु अपने ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर, गेंद को जब तक फील्ड किया जाता है शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का ओवर तो, लेकिन
दूसरा रन यहाँ पर नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 के रूप में 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10 for the loss of 5 wickets. What a fantastic match is now progressing here. The qualifier match number 2 of this prestigious cricket tournament KPL Kadri Premier League season 11 2026 और अगली गेंद लेकर संतोष इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतर गेंद थे, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया, निशाना इस वक्त चूक चुका है स्ट्राइकर एंड पर, वरना निश्चित रूप से बल्लेबाज के लिए खतरा यहाँ पर पैदा हो सकता था। एक और 22 रन इस वक्त जुड़ता हुआ गोकुल टाइगर्स के खाते में। जहां तक सवाल है विकेट कीपर अंतिम 2 गेंदों में ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया, फलस्वरूप 2 रन 22 के रूप में बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। और इस बीच साई संतु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, अपनी ओर की 5वीं गेंद कहना पड़ेगा। सतीश जो कि इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद रिवर्स और गेंद को खेल दिया, इस वक्त गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन जी नहीं, यहाँ पर रन का खतरा, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। तो पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़े और थोड़ी सी झिझक दोनों बल्लेबाजों में अंतिम क्षण में, और यहाँ पर देखिए थ्रो पहुंचा था और थ्रो को रिसीव करते हुए इस वक्त फील्डर ने थ्रो किया, इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और आखिरकार ये रन आउट यहाँ पर होता हुआ 1 more विकेट फॉलन। द मैन डिसमिस्ड इज सुजी और 12 रन अंतिम ओवर उन्होंने प्रदान किया था, जो बल्लेबाजी में उस गलती पर पैचवर्क को इस वक्त नहीं कर पाए, और यहाँ पर 2 रन बनाने के बाद 4 गेंदों का सामना किया और आखिरकार रनआउट के रूप में दुर्भाग्यवशात पेविलियन वापस लौटते हुए 12 रन पर छठा विकेट खो चुका है। It's 12 for the loss of 6 wickets for Gokul Tiger. They are really struggling out in the middle. और नंबर 8 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए निस्संदेह इस वक्त ब्रेकिंग द शैकल्स, बंधनों को अगर तोड़ना है तो एक बेहतर और तेज साझेदारी यहाँ पर निभानी होगी गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाजों को। और जहां तक सवाल है मोहन थंडर्स के गेंदबाजों को, तो अब तक उन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी की है और इस सफलता के सिलसिले को पारी के अंत तक बरकरार रखना होगा मोहन थंडर्स के गेंदबाजों को। और इस बीच साई संतु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सतीश जो कि इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद सतीश के लिए ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद हवा में शॉर्ट टर्न फील्डर के हाथों में, मिस फील्डर, 1 रन बल्लेबाज को मिला, 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चाहिए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ठीक तरह से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए शॉर्ट टर्न पर, और 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन पर 13 for the loss of 6 विकेट। सतीश पहला बेहतर ओवर, फर्स्ट बेटर ओवर केम टू एंड 6 रन केम फ्रॉम दिस ओवर। हालांकि विकेट जरूर गिरा सुजीत का, लेकिन 6 रन बनाने में सफल। अब अभी भी लक्ष्य कठिन, 17 रन 12 गेंदों में, और ऐसा कहना पड़ेगा दिलेर भरी गट्सी बैटिंग इस वक्त गोकुल टाइगर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। Exactly, hope it. 17 runs required for the victory. The 17 पे कतरा and 12 balls remaining. They have to get that 17 remaining runs. Maybe it's a big ask, Gopi. 8.5 runs per hour in this condition, and this is going to be a big ask. But Gopi, the cricket is unpredictable game, and the cricket is game of glorious uncertainty. But uncertainty which is not happening regularly in cricket. If you want to make the uncertain, Gopi, this is very important over for the team. For the team Tigers, they have to roar here. The batters have to roar like Tigers, and they have to get at least 10 runs in this over. Then it's going to be so easy when going for the last over. If it's going to be a good over here, and Gokul Tigers, I think it's going to be very difficult for them to make to the finals of this prestigious KPL. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर रन इस ओवर में बनाना जरूरी बन चुका है गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाजों को। कम से कम 8 से 10 रन यहाँ पर बटोरनेंगे, और जितने भी कम रन इस ओवर में बनेंगे उतने ही ज्यादा दबाव गोकुल टाइगर्स के बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ेगा। और जहां तक गोकुल टाइगर्स के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, तो इस वक्त सतीश इस वक्त एक छोर पर मौजूद है, और उनकी उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सतीश 8 गेंदों का अब तक वो सामना कर चुके हैं, और इस वक्त कुछ इशारा करते हुए खिलाड़ी शायद प्लेयर्स डकआउट की ओर और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। 17 रन चाहिए 12 गेंदों पर, और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो श्रवण का आगमन इस वक्त हो चुका है। इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल एज अ नंबर 8 बैट्समैन फॉर गोकुल टाइगर्स, और वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और अंपायर्स और खिलाड़ी इस वक्त प्लेयर्स डकआउट की ओर ताकते हुए, शायद यहाँ पर फील्डर्स बदल दिए गए हैं, और दूसरे फील्डर इस वक्त मैदान पर उतरते हुए, और इस वक्त वो अपने स्थान पर इस वक्त जाते हुए, फील्डिंग प्लेस पर इस वक्त जाते हुए, और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। 12 गेंदें बाकी 17 रन चाहिए। काफी दिलचस्प मैच, क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट केपीएल कद्री प्रीमियर लीग सीजन 11 सीजन 11 2026 के तहत यहाँ पर खेला जाता हुआ।
और पवन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। सतीश इस वक्त सामना करते हुए सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित इस वक्त गोकुल टाइगर्स के। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर पवन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सतीश इस वक्त सामना करते हैं। फील्डिंग प्लेसिंग इस वक्त छा चुकी है और ओवर की पहली गेंद लेकर पवन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सतीश के लिए ये गेंद इस बार सतीश के लिए। गेंद को इस वक्त खेल दिया सीधे मिडऑन की दिशा में। सतीश दौड़ पड़े, निशाना चूक चुका है। इस वक्त नजदीकी मामला हो सकता था। इस वक्त डायरेक्ट हिट अगर टकराता नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ तेजी के साथ बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 14 रनों पर। नाउ द इक्वेशन स्टैंड 16 to get from 11 deliveries और लेफ्टी बैट्समैन is now going to face the bowling of पवन और श्रवण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पवन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज पवन के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। हालांकि गेंद ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और इस वक्त सतीश कुछ बढ़कर स्ट्राइक रन की ओर बल्लेबाज श्रवण को कुछ समझाने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए निश्चित रूप से हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। 16 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी। 16 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 10 बॉल्स और इस बीच पवन अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ मार्टी, नॉट सक्सीडेड, अगेन अ डॉट बॉल बॉल्ड, 2 consecutive डॉट बॉल्स एंड स्ट्रेट अवे द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन द बैट्समैन। और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए पवन पिछली गेंद को इस वक्त टिप्पा खिलाने के बाद नीचे रखने में सफल और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद को कनेक्ट करने का, तो गेंद को कनेक्ट इस वक्त नहीं कर पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। अगली गेंद लेकर पवन इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट श्रवण गेंदबाजी इस वक्त। ये गेंद इस बार श्रवण का स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर, लेकिन शायद वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है, थोड़े से सीधे मौजूद है और एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। सतीश इस वक्त स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, शायद उनके पैर पर चोट आई है। मैदान पर इस वक्त वो बैठे हुए हैं और ऐसा कहना पड़ेगा शायद बल्ला या ना बैट उनके पैर पर टकराया था रन दौड़ते समय। और इस बीच दूसरे खिलाड़ी उनका उपचार यहां पर करते हुए। 1 रन जरूर पूर्ण हो चुका है, 15 रन बन चुके हैं और इस वक्त खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और जहां तक सवाल है गोकुल टाइगर्स के विजय का, तो यहाँ पर असल में देखिए क्या हुआ था। इस वक्त गेंद को दिखाया जा रहा है, गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में बढ़ते हुए और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा और एकमात्र रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। और काफी हद तक दर्द इस वक्त महसूस करते हुए बल्लेबाज सतीश। और इस वक्त जहां तक गोकुल टाइगर्स के विजय का सवाल है, इस वक्त उनकी उपस्थिति, सतीश की उपस्थिति इस वक्त गोकुल टाइगर्स के लिए बेहद जरूरी है। और मैच के इस मोड़ पर चोटिल होना निश्चित रूप से उनकी टीम गोकुल टाइगर्स के लिए काफी महंगा यहां पर पड़ सकता है। और इस वक्त उनका इलाज, उनका उपचार इस वक्त करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, शायद घुटनों पर उनके कुछ हद तक वो दर्द महसूस करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त खेल का, जो कि कुछ क्षणों के लिए मैच इस वक्त रुक चुका है। अलवा सुपर किंग्स जो कि इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है और दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में इस वक्त प्रवेश प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मुकाबला जारी है गोकुल टाइगर्स और मोहन थंडर्स के बीच। दर्शक इस वक्त मैदान पर मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए और शाइन स्पोर्ट्स के कैमरामैन इस वक्त फोकस करते हुए इस वक्त सारे दर्शकों के ऊपर जो कि मैदान के चारों ओर इस वक्त मौजूद है। और जहाँ तक सवाल, एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव कवरेज शाइन स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जाता हुआ और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला KPL कदरी प्रीमियर लीग सीजन 11 2026 एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। और अब कुछ हद तक सही सलामत सतीश और सामना करने के लिए तैयार है इस वक्त पवन की गेंदों का। 8 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए। 15 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 8 बॉल्स और दिस इज गोइंग टू बी रियली टेस्टिंग टाइम फॉर द बैट्समैन ऑफ गोकुल टाइगर्स नाउ। और पवन इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सतीश इस वक्त सामना करते हुए, हालांकि कुछ हद तक दर्द जरूर महसूस करते हुए, लेकिन कुछ हद तक सही सलामत इस वक्त तैयार। और पवन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा। सतीश ने गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। इस इशारा कोई भी नहीं, डॉट गेंद। और इस वक्त 7 गेंदें अब बाकी हैं और 15 रन चाहिए। मिस जजमेंट इस वक्त किया था सतीश ने, गेंद को छोड़ दिया था अंतिम क्षण में। इस ओवर में अंतिम बार पवन इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर
आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का। दिशाहीन गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गुजरती हुई और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। लास्ट टाइम इन दिस ओवर पवन बॉल्स टू सतीश। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाह चुके इस वक्त क्विकर गेंद थी, शॉर्ट फ्रंट लेग पर पहुंची, बेहतर ओवर की समाप्ति एंड जस्ट 3 रन्स कंसीडर्ड बाय पवन इन दिस ओवर एंड द फिफ्थ ओवर केम आफ्टर 5 overs. Still the problems are continuing for the batsmen of Gokul Tigers. 14 runs to get from last over. सतीश अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ आक्रामक बल्लेबाजी ही इस अंतिम ओवर में गोकुल टाइगर्स को इस मैच में वापस ला सकती है। Exactly, Gopi. Gokul Tigers absolutely fails to roar. They need to, there's definitely they're not really justified the name the Tigers what they got and the last chance, Gopi, the last opportunity for the batters to get the 14 runs in last over. It might be a difficult one but not impossible, and of course difficult road often leads to beautiful destination, and destination here for the team the 14 runs in the last over, the 30 which is definitely going to be a target, and wait and see how well these two batters will going to get this total. Having Satish and left and right combination, Gopi, is always, you can see in this particular cricket down there is some advantage for the left hand batters. If they can get some more runs in the onside region, they will more opportunity to run the right hander batsman. So this is going to be some kind of different technique to be implemented here from the left hand batters. If you manage to get some proper connection, you can get some couple of big shots and can change the game. But still now, Gopi, the team of Mohan Tenders are looking in top. बिल्कुल सतीश, इस वक्त बाएं हाथ के लिए ज्यादा उपयुक्त तो साबित हो चुका है ये मैदान ना, और उसके लिए स्ट्रोक लगाना काफी आसान हो चुका है। जैसा कि इस श्रृंखला में हमने देखा है कई शॉट ऑन साइड पर छक्के के लगाए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, और यहाँ पर पहली गेंद पर इस बार गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सिंगल्स के रूप में इस वक्त बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए 5 गेंदें बाकी 13 रन चाहिए, 13 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 डिलीवरीज, और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त देवी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Heartily welcome to Mr. Vedvas Kamath. Heartily welcome once again to heartily welcome once again to Mr. Vedvas Kamath, MLA of BJP, and heartily welcome to you sir once again to this prestigious cricket tournament. So the equation stands 5 balls, 13 runs required. Kadri Cricketers Club ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 11ರ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಗಮನ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೆಡಲ್. ಹಾಗೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೌರವ್ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೌರವ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ beloved MLA of South Constituency, Vedvas Kamath sir, for this prestigious cricket tournament, Kadri Premier League 2026 season 11. धन्यवाद, और एक बार फिर से
शमान विद्वास का मत इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो 4 गेंदे बाकी, 13 रन चाहिए। विकेट गिर चुका है। इस बार इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए और सीधे फील्डर के हाथों में डीप एक्स्ट्रा कवर पर वन मोर विकेट फॉर ऑन फैंटास्टिक स्ट्राइक बट स्ट्राइट टू फील्डर, प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड द बैट्समैन पेड अ पेनल्टी फॉर दैट। द बैट्समैन चिंतन डिसमिस। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, दमदार स्ट्रोक जरूर था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं। और 8वां विकेट यहाँ पर गिर चुका है। गोकुल क्रिकेटर्स आर लुकिंग deep in trouble. In fact, 17 on the board, 13 to get. The last chance in front of the batsmen of Gokul Tigers. 13 to get from 3 balls. जो अंतिम ओवर में गेंदबाज सुजीत ने 12 रन प्रदान किए थे, वो 12 रन इस वक्त गोकुल टाइगर्स के लिए काफी महंगे यहाँ पर पड़ते हुए, जबकि इस वक्त 13 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि 3 गेंदें बाकी, 2 विकेट सुरक्षित। और गेंदबाज देवी इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। नंबर 10 बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार चंदू, और देवी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल they got. Now 2 sixes required in the last 2 deliveries. The last chance in front of the batsmen of Gokul Tigers. 2 छक्कों की जरूरत अंतिम 2 गेंदों में। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಪುಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ರೋಷನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲಲ್ಬಾಗ್ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ರೋಷನ್ ಪೂಜಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕತ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 11. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. So this is an outstanding catch taken by the square leg fielder. Have a look at this in the replay. Just lofted that one and he just grabbed the catch with one hand. This is an outstanding catch taken by the square leg fielder. And because of that spectacular catch, one man has to go. 9th wicket for him. Have a look at this in the replay. This is an absolutely magnificently held by the fielder at square leg. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರೋಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಲಲ್ಬಾಗ್ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಷನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಈ ಆಗಮನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. So that's it for this match. And Mohan Thunders are through to the grand final of this competition, defeating Gokul Tigers by a margin of 11 runs. And that last over, which Sujit conceded 12 runs, and that 12 runs will be the turning point of the match. And finally, Gokul Tigers lost the match by 11 runs, and 11 runs victory for Mohan Thunders. And with that victory, they are through to the next round of this competition. They are through to the grand final of this competition. Now it's going to be a battle for title between Alba Super Kings versus Mohan Thunders, and that match, final match, that mega final match is now coming up live exclusively right in front of you within just a short while. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸರ್. So man of the match of this match award goes to Manjunath for his fantastic bowling figures of 2 overs, 1 maiden, 3 runs and 2 wicket. 2 overs, 1 maiden, 3 runs and 2 wicket. Fantastic bowling performance. Manjunath adjudged man of the match. Aasare friends Kadri. ವರ್ಷದ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಯೋಜನೆ. ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಗೋಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆವೊಂದು ತಂಡದಕ್ಕಲ್ನ ಓನರ್ ನಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಟೀಮ್ದ ಪೂರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಗೆದ್ದೋಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ KCC KPL SEASON-11 ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು ಚೋಕ್ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೂರಾ
ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿನ ಟೀಮ್ದ ಓನರ್ ಬಕ್ಕನಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರಂತರವಾದ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಬಗ ಹರಿಸಮಾನ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ರಕ್ತದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದ ಏರಗಣ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಂತ ಅಗ್ನಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತೆ ಬೇತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೊಂದಿದೆ ಕೊಡುಗೆ ಕುಟದ ಶಾಸಕ ಆದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರಪೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಖಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಆ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಿತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉಪ್ಪಾಡ ನಿಖಲು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಿಖಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಡ ಆ ಉದ್ಯೋಗಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಡೆ ಬರೋಡಂದೇನಿ ಕೋಡೆ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ರಟ್ಟು ದಿನಟ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 75 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮುಂಜಿ ದಿನ 41ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ಆದ ಅಕೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾದ ಬತ್ತೇಡಲ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಅಂದು ಪಣದು ಕೋಡೆಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಲನ್ನೇ ಮಾದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾದ ಹೊರಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾದಾತ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಡೆ ಈಚಕ್ಕೇನು ನಾನಾ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತ ಪುಟ್ನ ನನ್ ಗೊಬ್ಬವ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ನಿಕ್ಲು ಕುಸಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಓಲಾಂಡಲ ವೇದ ಹೆಸರು ಬೈಜಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯ ಚಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಪಗ ಈ ವೇದ ಹೆಸರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಲ್ಲೆ ಯಾಪಗಳ ಉಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗವಣೆರನ ತಂಡ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಇತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಡ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಕಾದ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಗಳ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕೇರಿದ ಮಿಲಾಗ್ರಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನಿತ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಲ ಪೊನ್ನಲ ಕಾರ್ದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದೇರು ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ದಾದ ಇಷ್ಟು ಮಲ್ತದ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಐಜಿ ಪಣದಾಂಡಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗುಲ ಪನ್ಲೆ ಏಪ ವೇದ ವ್ಯಾಸರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆನೆ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಖಲು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಐಟ್ ಆಜಿ ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ 7 ಟೀಮು ಈಶ್ವರಣ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗೋಕುಲರ್ ಉಪ್ಪು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಉಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕದ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಪಕ್ಕ ಸುಧೀರೇರು ನಿಖಲ್ನ ಒಂದು 7 ಜನ ಮಾಲಕೇರ್ನ 7 ಜನಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾರ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಗೆದ್ದೋನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಗೆದ್ದೋನಚ್ಚಿ ಅಂದು ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಗೆದ್ದೋನೋಡು ನಿಖಲ ತಂಡ ಮಲ್ಪವನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಲೆ ಈತ ಮಲ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಈತ ಪೂರ ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಡ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡಪವಡಂದ ಆಂಡ ಖರ್ಚುಂಡು ಆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಮೃತ್ ಕರ್ತಿಯರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈದೆರ್ಪುವೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಖಲು ಇಂಚನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದುಪ್ಪುಡು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಕುಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷమైన ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತು ಆ ಜವಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತಿನ ಜವಣೆ ಇತ್ತೆರಡ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಯಗೆ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬರೋಡು KCCR ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ
ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 100 ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಲೆಬಣ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರೇ ಇತ್ತೆತ್ತ ದುಂಬು ಅಂಚಪ್ಪುನಗ ಯಾನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಎನ್ನ ಶಾಲಾ ಬಿಡ್ತಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನ ಯಾನ ಎನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫುಡು ಯಾನ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಕುಬಂದಿತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆಲ್ಲ ಮೇರಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಮೇರನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ರಾಡ್ ಯಾನ ಅಂಡರ್-16 ಅಂಡರ್-18 ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಓರಿಸ್ತಾ ಚಂಡೀಗಢ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತಿನ ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಮತ್ತೇರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೆಕ್ಕಡ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನನಲ 11 ಪ್ಲೇ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಪರ್ಪಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ 10 ಅಮೃತೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪರ್ಪಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ 10 ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ 2 ಜನಲ ಬುಲ್ದು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡಂದ್ ಬುಲ್ದಂಗಿ ಉಂಡಂದಾನು ಉಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏರೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪರಿಸರ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಕಲ ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತನು ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಉಪ್ಪು ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಗಂದ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡಂದಾಂಡ ಈ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದನೇ ಬನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರದು ಇನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಆಯೋಜಕರನ ಪರವಾದ ಇಡೀ ಪರಿಸರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ಕುಡರ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಜವಣೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕೇರಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಜಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಾದ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಮೆದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಗ್ಲು KCCR ಕದ್ರಿ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೇರ್ ತುಂಬುದ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ನಂಬರ್ 2 ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇರ್ನ ಪಾಲಾಪುನ ದಯಮಂತದ ಮಂಜುನಾಥ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಎತ್ತು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ of Mohan Tandar, kindly request you to please receive the man of the match award from our the respected MLA Vedivas Kamath. I request Manjunath please come to the main stage to receive the man of the award from our beloved Vedivas Kamath sir. ಎಂಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೆಂಡಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೈದಿನ್ ನೆಟ್ ನಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಟೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡುಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಟ್ಟಿ ಬವಾಡ್ ಎಂತ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರುವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೋಹನಣ್ಣ ಟೀಮ್ದ ಬಲೆ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಮೋಹನಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಯಾರ ಐತ ಗೆಂದಿನ ಮುಕ್ಕಲೇನಾ ಮೋಹನಣ್ಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಬರಡವೇ. Yes, sir. Thank you very much, Vedivas Kamath sir. It's time to present the man of the match award with the bat. This has been absolutely one of the most golden moment for any player when you're receiving the man of the match award from our very popular beloved MLA of South Constituency, Vedivas Kamath, going to present this man of the match award. The bat for Manjunath is famously known as the big man of underarm cricket. Manjunath receiving the man of the match award. Thank you very much. Congratulations, Manjunath, for your wonderful performance and takes your team into the mega
final of the prestigious KPL 2026.
I request the captains of Alva Super Kings as well as Mohan Thunders, please report to the stage for the toss procedure. ಅಲ್ವಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಥಂಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Mohan Thunders are won the toss, and what the decision they will take, just we have to wait and see.
Welcome back once again. The mega final of Kadri Premier League 2026 season 11, which is proudly presented by Kadri Cricketers Club registered Kadri Mangalore in association with the Aasare Friends Kadri. We are in this the final match, the mega final, the two much deserved team in the mega final. The team Mohan Thunders will going to play against Alva Super Kings. This is going to be a great battle for the title, KPL season 11. And wait and see which team will going to win this match. After winning the toss, Mohan Thunder captain, and no hesitation. They elected to bat first in this condition, and wait and see how well they're going to justify. Signal came from umpire Sriraj, and everything is ready here for opening over. And Ritesh will going to start the proceedings. Quite surprisingly, he will going to open the innings, open the bowling from the commentary box end, and in front of him, the batter Dikshit will going to face his first delivery, and Manjunath will be the non-striker. Fantastic tournament for Manjunath so far in this KPL season 11, as he performed more than the bat is performed from the bowling. He's taken his team into the mega final with a great effort bowling performance by the bowlers. And here comes first delivery Mitesh with a short run up. Right arm over the wicket, balls to Dikshit. Wait and see how Dikshit and Manjunath will going to lay the foundation in this mega final. Both the teams wanted to become the champion here. The first ball nicely driven there by Dikshit, one of his favorite area. They're very strong in that area, and the ball which is almost coming into the batter outside the line of off stump, and he's got a single down to extra cover. He's off the mark, and the team Mohan Thunder is also off the mark with the single run. Here comes Mitesh again, right arm over the gate. Nicely peddled down to square leg region for single. Both the batters are off the mark. Manjunath and Dikshit. Mitesh, third time in this over. So far did a wonderful job in the bowling department for the side of Alva Super Kings. Why they are in the mega final? Because of the Mitesh and all bowlers did a wonderful job in this tournament. Full toss and driven that one firmly down to deep long on region. Fielder is there in the deep long on. We're going to cut it off from moving from long off to long on. Ample time for batter to complete the single. 3 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Altogether, again wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. Wicket keeper missed it, but short third man fielder will not going to miss this opportunity to field the ball. In fact, the short fine fielder. And the batter is trying for the reverse sweep. No run scored. Mitesh again. Oh, lovely delivery indeed. And Manjunath tried to get that one against the line. Leg by call by umpire. Hitting him outside the line. And good delivery there from Mitesh. That's really Manjunath confused that delivery, what to do in that occasion. And scoreboard remains on 4 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Mitesh once again back to his bowling mark. To Dikshit. Just wanted to go for the drive. Wicket keeper is not really backing up behind the stump. Missed it completely. The opportunity for the batter to complete the single in the form of bye. First over completed after completion of 5 first overs. And Mohan Thunder 5 without loss of any wicket. Up to a very steady start from the opening batters. 5 without loss of any wicket. This is not a small number when you're getting 5 runs in the first over, especially in this condition. Without losing any wicket, might be a good start here from the opening batters. 2 leg byes in that over with the 3 runs. Second over of the power play will going to start from the commentary box end, and wait and see. The bowler will going to bowl the second over. Jitu with the jersey number 8. The bowler will going to bowl second over of the power play. And wait and see how Dikshit and
Manju will going to get this second over for acceleration of runs there. Short point like square leg with in front of square, short mid wicket, mid off, mid on in fact, and one fielder down at short extra covers. The fielder at short cover point and one at backward point. Long off is there, deep extra cover is there. There is a two fielders outside the circle in the power play. Not more than two fielders outside the circle in the power play. Here comes the first ball. Nicely ball this time. Dixit wanted a single chance of run out there. Directly it is attempted. But unfortunately the ball misses the stump and they got opportunity to go for overthrow runs. Some kind of collision between bowler and the wicket keeper. Just have a look at in replay. Both are going for and the ball. And both are observing the ball, not each other. And that's why the reason they are of course some kind of collision between these two. 6 without loss of any wicket. Mohan Tandar. Manjunath wanted to go for the drive, doesn't get timing proper in the negation. Played it back to bowler. Jitu fields the ball and no run scored. Alwa Super Kings, they got opportunity to bowl the ball first even they lost the toss. But they got opportunity to bowl first. Third time in this over. This time extra bounce in the negation for Jitu. There's just a run out to direct. It might be a close one here for the umpire. And by call by umpire with the Texas Kubata Muzan to 7 for none. And the over number second is in progress. Such a wonderful leg spin bowler Jitu. It's not so easy for any leg spin bowler to come and bowl in the power play overs. You need to be very accurate in the line and length. Full toss. And Dikshit fails to take the advantage of that full toss. Just a single. With that single, Skobata moves on to 8 without loss of any wicket. This is one of the problem for the leg spinner. Sometime the ball, when you are trying for the quicker delivery, it can become a full toss delivery. Manjunath. Lovely delivery, beautifully bowled. Perfect line to ball when you are bowling your leg spin deliveries. Just around off stump, just inches outside the line of off stump and going away from the right hand batter. No run scored. Down the leg side, going to be a wide, punishable from the umpire. So this is something what not acceptable. Leg spinner bowling a wide delivery. It's 9-1 the board. Good runs now in this over. With the form of extras, leg by, wide. Couple of runs from the bat. Again, one more fantastic delivery. Confusion. Opportunity to run out. Manjunath is in trouble and is gone. Several times Manjunath becomes a run out here. Just have a look at the replay. Ball just passing that leg stump between bat and pad, and good throw came from the fielder. The very good presence of mind from the fielder. Returns the ball quickly to that hands of the bowler, and Jitu completes the formalities of making the run out. It's 9 for 1. Manjunath departs. The man of the match. The previous match is back in the pavilion. 2 completed. It's 9 for 1. So, no change in bowling. Looks like Mitesh will going to continue. The ball is second and last over of his quota. Bowled very well with the first over with the 3 runs with no wicket. And now we're going to continue. First delivery of the over numbers. Third. Bowlers back. Right, chance of run out.
The first attempt, Mitesh is not try to return the ball to the hands of wicketkeeper, but second attempt, it might be too late for him. Ravi Salian. Oh, lovely delivery from Mitesh again. Excellent one for Ravi. And wicketkeeper behind the stump in a fraction of second is uprooted the stumps. But no result for that. Scoreboard remains on 9 for 1. Ravi Salian has been appreciated by MLA Vedivas Kamath when he was watching the cricket. He's watched the catch of Ravi Salian. So he is appreciated. And it's always going to be the biggest the moment for any players. Once again, extra bounce in relegation for Mitesh. Back-to-back 3 dot balls here, putting some more pressure onto the batter. Mitesh once again outstanding in his line and length. You can see some consistency in the line and length so far from Mitesh. Across the line, pretty run to score, a chance of run out, and both the batters are quick enough to complete that risky single. With that single, Ravi is up the mark with the single. Scoreboard moves on to double figure 10 for 1. Over number 3 is in progress. This time appeal for leg before wicket. Umpire saying that ball is going to miss the leg stump, and one more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 11 for 1 in the over number 3 is in progress. Very hard to combine the runs. Ravi not really satisfied with the bat. He wanted to change the bat. They're quickly asking for another bat here. Wonderful cricket tournament is in progress with the great support from all the franchisee owners who are purchased the team. And if you wanted to make the Premier League successful, I think they are absolutely the backbone of any cricket tournament, the owner of the team. Once again, Kadri Cricketers Club registered and Aasare friends, Kadri, they are very thankful and grateful for our proud owners of the team. They are heartily supported for the success of KPL season 11. Ravi, the back on strike. Switch it is attempted again, the dot ball. The pressure is now building up more here. It's been outstanding over there from Mitesh. What a fantastic over. Just a single run came from this over of Mitesh. Just have a look at his bowling figure. 2 overs, no maiden. And he conceded just 4 runs in 2 overs. And without any wicket. But I think in this format of a game, the first time in the whole tournament, as per the information came from Jay Prakash, JP, our scorer commentator, is given the information that the first time in this tournament, Mitesh is wicketless. But I will not going to bother about the wicket, but he's just bowled an economical over. It's very important in the small format of game. It's all up to the how many runs you conceded. It's not just how many wickets you have taken. 2 runs is economy means it's been absolutely fantastic, and you're bowling 1 over in the power play, and that shows that how Mitesh is bowled in this tournament. 3 overs completed, and after 3 overs it's 11 for 1, and searching for the right track, and we didn't see how well Mohan Tandar will going to get some runs here in the remaining 3 overs. So time to change in voice, and Gopi, slow start for Mohan Tandar, and quite understandable. Alvar Super King's bowlers bowled very well, especially the Mitesh bowled brilliantly the 2 overs. Then Jitu is bowled very good 1 over. So altogether, Gopi, it's a slow start, but Mohan Tandar still has got opportunity to back in the game with some acceleration of run. That is very important to get into the competitive total in this mega final. Exactly सतीश, जैसा कि आपने फरमाया कम से कम 30 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा मोहन तंडस के बल्लेबाजों को। और चौथे ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथ में, रन नहीं मिलेगा। पहले 3 ओवर में यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा। अल्वा
सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया, सिर्फ 11 रन प्रदान करने में सफल। और तुषार बाएं हाथ के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दीक्षित इस वक्त सामना करते हुए और तुषार अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करते हैं। गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। तेजी के साथ गेंद को फील्ड करने के बाद फील्डर थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर, चौथा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। तुषार गेंदबाजी इस वक्त करेंगे, बल्लेबाज रवि पड्डैयर जो कि क्रीज पर मौजूद है, अभी क्रीज पर आए हैं और इस बीच अपने दूसरे गेंद की सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेलना, 4 रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त। शॉट तत्मान का थ्रो पहुंचता वन ऑन स्ट्राइक रेट पर, लेकिन इससे पहले थ्रो पहुंचे बल्लेबाज सिर्फ एकमात्र रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और ओवर थ्रो बैकअप ठीक तरह से यहाँ पर नहीं हुआ था और आखिरकार बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल बाइक के रूप में। और बाइक के इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। देखिए किस तरीके से हुआ था, विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी, शॉट तक फील्डर का फेंका गया वह थ्रो इस वक्त थ्रो को रिसीव नहीं कर पाए, कोई बैकअप नहीं था। जब तक लॉन्ग ऑन पर गेंद को बैकअप करते फील्डर थोड़ी सी फील्डिंग के मिसफील्ड के बाद डायरेक्ट हिट यहाँ पर टकरा था और बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 14 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर। जबकि मोहन थंडर्स जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ और अपने ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस ड्राइव किया, स्ट्राइट हिट टू द नॉन स्ट्राइक रेन। इनफैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल एंड गेट इट कंप्लीट एट लास्ट। डायरेक्ट इस वक्त गेंद जाकर टकराई थी सीधे नॉन स्ट्राइक रेन, 3 स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाते हुए। देखिए यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रोक था और बैक टू द बॉलर की दिशा में और गेंद 3 स्टंप्स को बिखेर कर ले गई इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर। कुल मिलाकर चौथा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर 15 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज तुषार अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दीक्षित जो कि इस वक्त सामना करते हुए तुषार की गेंदों का बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दीक्षित ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया ऑन साइड पर ऑन द रूफ फॉर कपल रन। 2 रन इस वक्त जोड़ चुके हैं उनकी पारी में। बेहतर स्ट्रोक था दीक्षित का, एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दीक्षित तो दीक्षित एलिमिनेटर मैच में भी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था। 20 रनों पर नाबाद रहे थे। ऑफ द टॉस गेंद को खेला इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर थोड़े से सीधे तैनात था और गेंद का स्क्वायर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 गॉन आफ्टर 4 ओवर्स। नाउ मोहन थंडर्स और 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 wicket still sitting for the right track. 7 runs came from the last over. Pretty good one in Mohan Thunder's point of view came to an end. Grand finale, mega final इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत under this prestigious cricket tournament is now progressing here under midnight. KPL Kadri Premier League season 11 2026 which proudly presented by Kadri Cricketers Club registered Kadri Mangalore in this beautiful Kadri ground Mangalore और मेगा फाइनल मैच इस वक्त प्रगति पर और इस श्रृंखला का चैंपियन खिताब अर्जित दर्ज करने के लिए इस वक्त चैंपियन खिताब प्राप्त करने के लिए इस वक्त मुकाबला जारी है मोहन थंडर्स और अलवा सुपर किंग्स के बीच। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए रघु ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है और जहां तक सवाल है इस वक्त पहली गेंद का, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा चूंकि और रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद कर रहा इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार टिप किया, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। गली फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड विद अ सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 19 for the loss of 1 wicket in the over number 15 progress. Still in overall calculation it's going to be 10 balls remaining in the innings और गेंदबाज रघु गेंदबाजी करेंगे रवि पड्डैयर के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड पर कैच को इस कैच छूट चुका है इस वक्त, कैच यहां पर छूट चुका है। मुश्किल से मौका जरूर
लेकिन कैचेस विन मैचेस एक बेहतरीन स्लोगन है, काफी मशहूर स्लोगन है, और यहाँ पर कैच को गवाते हुए जीतोड़ कोशिश जरूर की थी, गेंद तक पहुंच गए थे, लेकिन अंतिम क्षण में अपने दोनों हाथों में गेंद को दबोचने में असफल है, और बल्लेबाज के पास इस बीच मौका था 2 रन प्राप्त करने का. कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल विद दैट कपल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 21 on the board for losing 1 wicket in the over number 5 in progress. और गेंदबाज इस वक्त रघु गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रवि जो कि सामना करने के लिए तैयार है रघु की गेंदों का, और अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद चिप गया इस वक्त, नॉट आउट मिडली की चांस एंड टेकन टेक्स्ट कवर. That is the end of Raghu. Just wanted to play that one with a helicopter shot at the last moment, not succeeded, not quite get that one right from the middle of the bat. और एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था. Look at this in the replay. The ball straight went into the hands of extra cover fielder, and that is the end of the innings of Ravi Patayur. Is out for 3 and is out for 4 in fact, and a second wicket lost. It's 21 for 2. This is the mega final of this prestigious cricket tournament. KPL Kadri Premier League season 11-20-26 is now progressing here, which is proudly presented by Kadri Cricketers Club registered Kadri Bangalore. और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर रघु इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, साई संतु, और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. रात के 12:25 बज चुके. इट्स ऑलरेडी 12:25 एट मिडनाइट, और मेगा फाइनल का प्रथमार्ध प्रगति पर. द फर्स्ट सेशन ऑफ द ग्रैंड फाइनल ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. साई संतु सामना करेंगे इस वक्त रघु की गेंदों का, और रघु इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंदबाजी क्विकर गेंद थी इस वक्त रघु की. और जहां तक रनों का सवाल है, रन से इस वक्त नहीं मिलेंगे. स्कोर बढ़कर स्कोर रुक चुका है इस वक्त 21 रनों पर. 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. फैंटास्टिक लाइव कवरेज वी आर जस्ट वाचिंग हियर ऑन शाइन स्पोर्ट्स, और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त शाइन स्पोर्ट्स होकर करता है. न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस वक्त इस श्रृंखला का, इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए इस बार गेंद को उछाल दिया मिड विकेट पर, जस्ट ओवर द फील्डर सेट. और मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका. 1 more run added to the total. Scoreboard moving up to 22 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. 5 completed in fact. In fact, it's 5 was completed and 22 for the loss of 2 wicket for मोहन थंडर्स. And now just a last over remaining in their innings. और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में मोहन थंडर्स के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं. फिलहाल ऐसा करना पड़ेगा, पहले 5 ओवर में अलवा सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है. अंतिम ओवर शुरू होता है. लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन मोहन थंडर्स इनिंग्स, और गेंदबाजी शुरू करते हुए उमेश, जिन्हें पिछले मैचेस में काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था, इस मैच में ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई साई संतु, जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार है. और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर राजेश उबर, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज उमेश. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह नॉट करती दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द मैच. इज जस्ट गॉट अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल ऑन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th एंड फाइनल ओवर ऑफ देयर इनिंग्स. और गेंदबाज उमेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. Dixit is batting on 10 of 16 turnovers. Is now going to face the bowling of Umesh. और उमेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ड्राइव कर दिया, ड्रॉप दैट वन, ड्रॉप बाय द मिड विकेट फील्डर दिस टाइम. फ्लैटर वर्जन पर गेंद पहुंची थी, लेकिन इस गेंद को लपकने में सफल, और 1 रन बल्लेबाज और टीम इस वक्त प्राप्त करता हुआ. मोहन थंडर्स 24 for the loss of 2 wickets in the over number 6th and last in progress in their innings. साई संतु सामना करते हुए इस वक्त उमेश की गेंदों का दाहिने हाथों पर विकेट डाउन द ट्रैक, ड्रिवन दैट वन perfectly struck down to a long on. In fact, collected by the fielder, they completed one. They come back for the second. This could be in trouble. This could be in trouble, and he's gone. In fact,
He is gone this time. बिना किसी तीसरे अंपायर का साथ यहाँ पर बिना किसी तीसरे अंपायर की मदद लेते हुए इस वक्त आउट घोषित करते हुए यहाँ पर निश्चित रूप से विकेट यहाँ पर उखाड़े गए थे, तब बल्लेबाज शायद काफी नजदीकी मार रहा था इस वक्त, लेकिन अंतिम एक्शन में बिना किसी तीसरे अंपायर की मदद लिए वे इसे आउट घोषित करते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है. So one more wicket fallen in the face of run out. Is gone. In fact, he fell just short out of his crease. Or 25 for the loss of 2 wickets now. Now just 3 balls left in the overall calculation in that innings. गेंदबाज इस वक्त उमेश तैयार नए बल्लेबाज का आगमन होता है फिलहाल नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद है और सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज सही संतु और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए उमेश ऊपर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार फील्डिंग का मुआयना करते हुए इस वक्त साई संतु और उमेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हैं डाउन द ट्रैक अगेन मिसेस ब्रिलियंटली स्टंप्ड बाय विकेट कीपर. वाइड का इशारा भी हो चुका है और बल्लेबाज को आगे निकलते हुए देखकर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंक दी थी इस वक्त गेंदबाज उमेश ने काफी चतुराई से और इस बीच विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद कलेक्ट करते हुए तेजी के साथ विकेट यहाँ पर बिखेर दिए और साई संतो की पारी पर पर्दा गिर चुका है. वाइड एंड विकेट लॉस फॉर मोहन थंडर्स. इट्स 26 for 3. इन द रीप्ले ऑफ स्टंप से काफी बाहर विकेट कीपर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स. राजेश उबर द विकेट कीपर. More wicket fallen. Still 3 balls left in overall calculation in their innings. 26 for the loss of 4 wicket. New batsman is now comes out to the middle. चीतू इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और 3 गेंदें जो बाकी हैं देखते हैं 3 गेंदों में इस वक्त मोहन थंडर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. गेंदबाज उमेश फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. देर रात होने के बावजूद काफी मात्रा में दर्शक इस मैदान पर मौजूद इस मैच इस श्रृंखला का मुआयना यहाँ पर करते हुए इस बीच उमेश की गेंद ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाह पैरों पर गेंद टकराई और जब तक गेंदबाज गेंद तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. इट्स ऑफ द बैट इन फैक्ट 1 run added to the total. It's 27 for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress. Still couple of balls left in this over. और उमेश इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज नाजिल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर राजेश उबर करते हुए जानते हुए कि नाजिल बाएं हाथ के बल्लेबाज है लेफ्टी बल्लेबाज है. एक फील्डर को इस वक्त ठीक है डीप बैकवर्ड स्क्वायर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात किया गया है और उमेश अपनी ओवर की अंतिम गेंद दूसरी अंतिम गेंद लेकर द सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. नाजिल facing Umesh right arm over the wicket. This time just gone for a mighty and beaten and the ball running down to a short third man. It's off the leg. Single run added. 28 for the loss of 4 wicket in the over number for the loss of 4 wicket in the over number 6 and the last in progress. Last ball now remaining in the overall calculation in that innings. Umesh tayar. The last ball of the innings is now coming up. Umesh to Chetan lofted that one this time. Chance. No, he won't get that one. In fact, they completed one. They come back for the second throw came so wider and they completed second run very safely in the end. काफी वाइड थ्रो पहुंचता हुआ इस वक्त और विकेट कीपर राजेश उबर इस वक्त गेंद को थ्रो को रिसीव करने में असफल अपनी दाईं ओर जाते हुए जीत और कोशिश जरूर की लेकिन गेंद को इस वक्त लपकने में फील्ड करने में सफल और इस बीच 2 रनों का इजाफा हो चुका है. कपल ऑफ रन्स एडेड एंड विद कपल रन मोहन थंडर्स finished well with 30 for the loss of 4 wickets. Slower start for them but in the last 3 overs they grab 19 runs in the last 3 overs and because of that they finished well with 30 for the loss of 4 wicket after the completion of their 6 overs and now the target for Alba Super Kings is 31 they have to score. In 6 overs they have to score. That means in their stipulated 36 they have to score 31 with the help of 10 wicket. The present equation shows for them to become the champion of KPL season 11 2026. और देखते हैं यहाँ पर अल्वा सुपर किंग्स के बल्लेबाज इस 31 रन के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं. निर्धारित 6 ओवर्स में बचे हुए 10 विकेटों की मदद से 10 विकेटों की मदद से और
इस वक्त अलवा सुपर किंग्स के पारी की शुरुआत होगी. 31 द टारगेट फॉर देम इन 6 ओवर्स. और यहाँ पर मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, देखिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है विनर्स और रनर्स ट्रॉफी इस वक्त विराजमान हो चुके हैं इस वक्त भव्य स्टेज पर. और एक आधे पौने घंटे में यहाँ पर पता लगेगा कि इन दोनों टीमों का, इन दोनों ट्रॉफियों का हकदार यहाँ पर कौन सी टीमें बनेंगे. फिलहाल इस वक्त इन दोनों टीमें मोहन थंडर्स और अलवा सुपर किंग्स इस वक्त इन दोनों ट्रॉफियों को हासिल करने के लिए जीतोड़ कोशिश यहाँ पर करते हुए देखते हैं यहाँ पर चैंपियन आखिरकार कौन कहलाएगा. ये अगले 35-40 मिनट में हमें यहाँ पर पता लगेगा. तो इस वक्त 31 रनों का लक्ष्य, 31 द टारगेट इन 6 ओवर्स. दैट मींस इन द stipulated 36 फॉर Alva Super Kings, which is led by Mohan Thunders in the grand finale of this prestigious cricket tournament KPL Kadri Premier League Season 11 2026, which is proudly organized by Kadri Cricketers Club, registered Kadri Mangalore, in this beautiful Kadri ground Mangalore. 31 to get, and the innings now going to start of अलवा सुपर किंग्स. और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट मेरे काबिल दोस्त मेरे लंबे समय के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में जब यहाँ पर अलवा सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So thank you so much, Gopi, and welcome to this the final innings of this KPL. After this 2 days and night cricket tournament, we are almost in this champion decider innings. We're going to start here, and first ball will going to start here from the committee box, and Manjunath will going to bowl to Raghu the first ball. Down the leg side, Raghu wanted to get that one in the onside region, deflected from his legs, slight a bit of hesitation for the run. And at last they're going against that run, no run scored. So once again, big challenge here for the bowlers of Mohan Thunders. Again, they need to restrict their opposition under 31, and similar scenario what they had in the previous match. Once again, lovely delivery just outside the line of off stump. Raghu wanted to go for the drive, missed it completely. Manjunath has been outstanding. I'm not talking about his batting performance, but his bowling is absolutely spot on. Every time he's coming into bowl and open the bowling, is always starts with some excellent line and length, and this is what they got a success after getting a good start from the ball. They grabs the opportunity, full toss delivery, lack of placement, set off the chance of run out. In fact, for the fielder at short mid wicket region, but Raghu managed to complete this first run, the very risky run, because he hit that ball very hardly to that fielder at short mid wicket. And they managed to complete the single. 30 required for the victory now in 33 deliveries. They did a wonderful job in the previous match against Gokul Tigers when they depended that 30 runs. They once again they have to depend that 31 runs. Manjunath over the wicket. Appeal for leg before wicket. Certainly the ball is going to hit the line which is outside the line of leg, pitching outside the line of leg stump, and leg by call by umpire. With that leg by Scuba moves on to 2 on the board without loss of any wickets. A mega final of the prestigious Kadri Premier League 2026 Season 11 is in progress. Raghu
to face once again. Nice looking drive towards the mid wicket region. Almost the line was in the midland leg stump in the negation, and umpire saying it's a declared runs. Only one run here for the batter, and that means Raghu will going to retain the strike for the next delivery. 3 without loss of any wicket in the over numbered first season progress. Alwa Super Kings absolutely made the history here. The first time they are taking part in this tournament and the Kadri Premier League, and in the first attempt itself they are in the mega final. Their dream is to become the champion. Left hand bowls. Just I will loft it. Nice looking drive. Up and over. Down to deep long on region. Will it go into be a first boundary? Yes, it does. After long time we are seeing the boundary in this long on area. It's one of the most difficult area to get the boundary. But for this man Raghu, you can see that how easily done that. Short pitch delivered outside the line of off time. Lofted that one into the vacant area. This is a power play over. No one there in the deep long on, and long way to go for the long off fielder to run across his right to field the ball. Excellent placement there from Raghu. Almost he drags it from outside the line of off stump. Enough time for him to read that slow short pitch delivery from Manjunath. It's been a great start here for the team. Alwa Super Kings is going to be a super start for the Alwa Super Kings. 7 without loss of any wicket. That means 7 which is deducted from 31. That means 34 more runs required for the victory in the remaining 6 overs. The 5 overs correction. 30 ball, 24 runs needed for the victory. Correction. The 30 balls and 24 runs required for the victory. The asking run rate is now seems to be much easier for the team Alwa's Super Kings. And if Mohan Thunder wanted to back in the game, they have to get one good over here. Wicket taking and economical over, both which is required. Manish will going to take the strike, the left hand batter. This time I wanted to go for the safe side. Wicketkeeper behind the stump missed it, so that umpire will going to call that by Satish Murabidri. Wonderful job so far in this tournament from 3 umpires. Umpire Pushparaj, Sriraj, Satish Murabidri. A lovely job. It's not so easy for a couple of days and night continues. They're standing in the hot sunshine under light till late night, and absolutely it's been a great effort there from the umpires to make this KPL season 11 very successful. Nevertheless, in the scoring department, again played it very nice in the mid wicket division. Raghu is looking so good and well composed and controlled here. One more the very quality cricketing show, but not the quality delivery there from Dikshit. It's a full toss, and the batsman capitalized that one for a couple of runs, and quickly they made it double figure. 10 without loss of any wicket, 21 more runs required for the victory. Dikshit again, right arm over the wicket. Once again chipped it away. Lovely shot. The timing is exquisite in the negation there from Raghu. He is looking in terrific touch. This time the ball is almost in the mid-line leg stump, and he off the toes flicks it away safely down to mid-wicket for a couple of runs. It's well without loss of any wicket. Dikshit searching for the wicket, searching for the dot ball. 12 already on the board. Once again loose delivery. Again he treated that one into the mid-wicket for a single. And he is not happy with that. Raghu is thought it might be another couple of runs. 13 without loss of any wicket. A great start there from opening batter of Alwa Super Kings. Dikshit again. So Manish drives that one into the deep square leg in front of square. Only single. They doesn't want to take any risk. No need to panic at all. They got runs in this the tour of the power play. 14 already in this over. 1 delivery is left. Definitely it's going to be a great start here from the both opening batters. 17 needed from 25 now. The blind attempt without watching the line of the ball. Raghu wanted to go for the one more big shot on the onside region. Dikshit finished over. One more expensive over. After completion of over number 2, it's 14 without loss of any wicket. Alwa Super Kings
absolutely looking in complete control over this match. Even the time is exactly 12 past 35 in the night, but just have a look at that. Oh, this is going to be very interesting. Everyone is interested to watch the cricket, but not this man. Hard working maybe, and chinte illadavanigu santeyallu nidde, what you call, and definitely the man is one of the most happiest man in the world. I want to tell you, when you are getting that much of sound sleep, when everyone is excited to watch the cricket, but this man is absolutely dreaming. And the 14 without loss of any wicket, and all we can see that exciting faces here watching this mega final. Wanted to watch which team will going to become the champion of this prestigious cricket tournament. 14 without loss of any wicket. Alwas Pucking is off to a very good start. Pawan brought into attack. How to get the breakthrough here, and this is the breakthrough they desperately wanted in this situation like this. If Mohan Thunder wanted to back in this game, the breakthrough which is very important, and Pawan has got a breakthrough in the first delivery of this over. A beautiful off cutter coming almost around the legs of the batter. Incoming delivery, but the batter misses the line completely. Manish missed it. And first wicket back in the pavilion of Alwas Super Kings is 14 for 1. And that wicket will going to open the gate a slight bit of here for the team Mohan Thunders. Sign Sports having a fantastic live telecast in this cricket tournament. And with a great leadership of Rizwan. Rizwan done a wonderful job all along with Yunus and Rizwan. The brothers absolutely doing a great job in the live telecast. And this is one more example of their the very quality live telecast in this Kadri Premier League. A special thanks to Izaz, is the one in the technical field. Done a wonderful job. And of course in online scoring department we have a very young Safwan. Did a wonderful job. And of course the cameramans Salau, Iftaz, the cameramans did a wonderful job. Thanks to each and everyone, they were a wonderful contribution for the success of this cricket tournament. One more single has been added to total. And the new batter nicely swept that one into the final aggression. One more left-hand batter, Rajesh, is always going to be a good to watch. Left and right combination, it's going to be the benefits the team. The bowlers have to work hard when it's going to be left and right combination. Tipped it away nicely into the mid-wicket region. Will going to be a declared area. Only one run here for Raghu. Raghu almost looks like he's very complete control over his batting here. Very much controlled, isn't it? Showing all his experience here. And almost very little bit funny things happened here when the ball hits the main stage. Went into the main stage. Down the leg side going to be a bonus run here. Wide delivery. Pawan have to reball. Little margin for error. They're not depending a big total. You cannot depend a small total every time. 17 for 1. 14 more runs required for the victory. The Sam chipped it away and played it very nice in the gap towards the Deepak Sakawa. Raghu is very quick between the wicket and complete the valuable couple of runs now. What an innings playing here, Raghu. 14 runs in 11 balls. Being the experience is not important, but converting that experience into performance is very important. And in this big mega final, Raghu absolutely showing all his class in his batting. Again outside the line of off stump. Chance of run out. Ball just misses a stump. 1+1. The couple of runs added to total. Now Pawan is looking in more trouble. 21 for loss of one wicket. We can see that beautiful view of course, Baby, which is absolutely having a sound sleep. We were just talking about others, but
Just have a look at that small baby. They doesn't want to miss this the cricket tournament. That's for sure. The 22 for 2 and 9 more runs required for the victory. 19 deliveries remaining. Is plenty of deliveries remaining here for the Alva Super Kings to clinch that the first title for them. Again, played it nicely into the mid-off region. Just like I'm talking about, Raghu's batting has been absolutely outstanding in this final. One more over completed, 3 gone. After completion of over number 3, it's a 23 for 1. And just 8 more runs required for the victory. And wait and see how well they will going to get this 8 runs. Definitely a lot of hard work is required from the bowling side. Mohan Tandon. It's a time to change in voice and a final time in this KPL. I would like to call upon my friend Mr. Gopi to take over the microphone. And Gopi, it looks like the team Alva's Super Kings, definitely they are almost edge in this title what they wanted to lift, being the first edition for them, but never looks like going to be a first edition for them. The way that they performed in this tournament, almost there looks like just a 4 minutes left in this game. Unless any miracle will going to happen here from the Mohan Tandon's bowlers, I think definitely Alva Super King has got a golden opportunity to become the champion of this prestigious KPL 2026 season 11. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त पहला मौका है केपीएल का चैंपियन बनने के इस वक्त अलवा सुपर किंग्स के सामने, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पहली बार इस वक्त खिताब जीत रहे हैं। और यहाँ पर मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ। इस बीच पहली गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर 2 रनों के लिए। और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा मोहन थंडर्स के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए अब चाहिए एक चमत्कारी गेंदबाजी, सिर्फ चमत्कारी गेंदबाजी। ओनली मैजिकल बॉलिंग कैन change the picture of the match on the sides of Mohan Thunders. और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त रघु का, इस बैटिंग on 17 of just 10 deliveries. Fantastic batting performance continuing here from रघु। और इस बीच मंजुनाथ गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रात के 1 बजते हुए, लेकिन 1 बजने के बावजूद इस वक्त दर्शक इस वक्त काफी मात्रा में इस मैदान पर मौजूद है। और सही वक्त के बारे में कहा जाए तो 12:45 यहाँ पर बच चुके हैं। मंजुनाथ ये गेंद नेक्स्ट से बाहर की ओर निकलते हुए शॉट फाइन लेग फील्डर चुके हैं, बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना चोट बदल चुके हैं। डायरेक्ट हिट इस वक्त लगता हुआ। और जहां तक सवाल है इस वक्त डायरेक्ट हिट का, तो इस वक्त अंपायर तीसरे अंपायर के लिए इशारा कर चुके हैं। तो इस वक्त विकेट शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों से गेंद चूकी थी। वापस गेंद को फील्ड करने के बाद स्टंप्स पर निशाना लगा, उनका निशाना डायरेक्ट हिट इस वक्त लगता हुआ स्टंप्स पर। तब तक देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं या नहीं। और यहां तक रनों का सवाल है, एक रन तो जरूर मिलेगा क्योंकि गेंद वाइड है इस वक्त। और जहां तक सवाल है दूसरे रन का, तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन, इसकी जांच करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। इसको बोर्ड इस वक्त तीसरा अंपायर जो कि इसका परिशीलन करते हुए। और यहां तक सवाल है इस वक्त, देखते हैं बल्लेबाज इस गेंद पर बचते हैं या नहीं। तो इस वक्त रघु के लिए देखना है कि इस गेंद पर वो बचते हैं या नहीं। तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो रेफ्रिजरेटर इस वक्त यहाँ पर रखा गया है मेन स्टेज पर, यहाँ पर दिखाई देता हुआ मॉनिटर पर, जो कि आसरे फ्रेंड्स कप कदरी इनकी प्रस्तुति है रेफ्रिजरेटर। और सीरीज इनामों के बौछार इस श्रृंखला के रखी है संगठक रखे हैं संगठक कदरी क्रिकेटर्स क्लब रजिस्टर्ड कदरी मंगलूर के संगठकों ने इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। इस प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस केपीएल कदरी प्रीमियर लीग सीजन 11 2026 के तहत सीजन 11 2026 के तहत। और इस सुंदर से कदरी क्रिकेट ग्राउंड मंगलूर पर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार मंजुनाथ, जस्ट 3 to get for victory for Alva Super Kings to become the champion of the edition 11 of KPL 2026। और इस बीच मंजुनाथ अपनी ओवर की
अगली गेंद लेकर तैयार राघु के लिए, इस बार चिप कर दिया है गेंद को, गेंद हवे में, फील्डर गेंद के नीचे आते लेकिन नहीं, गेंद टू स्क्वायर छत पर टिप्पा खा चुके, द बॉल पिच ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, और 2 रन बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर्स आर ऑन लेवल. फैंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम Raghu. He's batting on 20 of 16 deliveries. This time cuts that one. That's it. That's it for this tournament. And Alva Super Kings become the champion of KPL season 11 2026, Kadri Premier League season 11 2026, defeating Mohan Thunders by 9 wickets with 2.1 overs to spare. And fantastic teamwork came in this tournament from Alva Super Kings, and because of that they become the champion for the first time for them, and in the edition of KPL Kadri Premier League season 11 2026. So congratulations for winners and runners, and all the teams who participated in this tournament. And finally Alva Super Kings become the champion of Kadri Premier League KPL season 11 2026. Now all the cricketing actions are over. We are just taking a short break, and we'll be back right after the short break, not with the cricketing action but in the presentation ceremony. So spectators, don't go away, stay with us, and we'll be back right after the short break in the prize distribution ceremony. So now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
I request Mr. Dhanraj as well as Mr. Deepak to please report to the committee dais.
Hello, check. Mic testing. 1, 2, 3. Check. Hello, check. So, welcome to the post-match presentation ceremony of the prestigious Kadri Premier League 2026 season 11, and we are going to start the post-match presentation ceremony. I request all the players ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಇವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಾಗಿ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಲ್ವಾ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಮೃತ್ ವಿ ಕದ್ರಿ, ಸಿಡಿ ಸಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಕದ್ರಿ, ಮೋಹನ್ ಟಂಡರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೌರವ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ರಾಜೇಶ್ ಕದ್ರಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಹಾಗೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಪ್ಪನಾಡು, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಲ್ಕಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಎಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯರು, ದಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ done a wonderful job to make this great tournament very memorable one and very successful one. First of all, I would like to call upon on the stage the umpire ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿ ಎಂ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿ ಎಂ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿ ಎಂ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿ ಎಂ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಇವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿ ಎಂ ಫಾರ್ ಯು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್-11. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಬಳ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಬಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತ ಪ್ರಚಲಿತ very much demanded umpire in the present the cricket. Thank you very much Sriraj for your wonderful contribution for the success of this cricket tournament. ದೇವರು ತಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದರೆ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದರೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ಗೌರವದ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದರೆ ಫಾರ್ ಯು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, one of the most difficult job to do, and it's one and only Jayaprakash as a scorer in this tournament. ಖಾಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ KPL. ಗೌರವ್ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಫಾರ್ ಯು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಬಂದು ಅವರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹಿಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಹಿಂದಿ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್. 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ ಅವರದು. ಸೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ and absolutely Gopi will going to we're going to receive the medal, receive the shawl from our chief guest. Thank you very much Gopi for your wonderful contribution as a commentator in Hindi language for this prestigious Kadri Premier League 2026 season-11. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಒಂದು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು
ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಶೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಶೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಿಂದ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ, ಈಗ ಅವರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯ. ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅವರು ತೆಗೆಯುವಂತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರೀತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನಗರರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. We are all now coming to the most important part of this cricket tournament, which is prize distribution, post-match presentation ceremony. ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಊಹಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್, the man who has got a fantastic career as the cricketer. ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಕದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಕದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಲು ಇವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೇ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ತಂಡ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲಕ ಕದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, 1 ಕ್ಯಾಚ್. ಈಗ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 75,000 ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಮೊತ್ತ. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ವೆಲ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ felicitation here for Rajesh Ubar. He is a multi-talented. Of course, ಇನ್ನೊಂದಿರುವ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ರಾಜೇಶ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್. Yes, now it's the time for the individual performance of this prestigious Kadri Premier League 2026. The first one is the man of the match of the final. The man of the match final, which is goes to the guest banda Satyanejar guest enchina manpunu ar gobude rat shoku. So it's one and only. Please welcome Raghu of all Vassable Kings. Purella panpere Raghu. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ರನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ
big final. He scored a valuable runs in bowled brilliantly. So it's well deserved. The man of the match of the final is going to receive the bat from our chief guest. Chappale Kanjusiman Porchi. Team the player Nakule Tati Botandijar. Yes. Raghu, the man of the match of this prestigious mega final, Kadri Premier League 2026. Congratulations, Raghu. The next one, the best bowler of the tournament, which is goes to. Any guess? Absolutely, you are right. Chota Pack, Bada Dhamaka. Yes, it's one and only Mitesh with the 14 wickets in this KPL, and is must deserved the award for him as the best bowler of the tournament. I request Mitesh Vedike Banni. Ingepala confusion, Mitesh Baka Nitesh da. Onjela koller tu here. Yes, the Mitesh of Alwar Super Kings will going to receive the purple cap for the highest wicket in the tournament. Congratulations, Mitesh. A wonderful performance. Dominated with the ball and is much deserved the best bowler. Very attractive trophy. We're going to receive from our chief guest. Thank you very much. Yes, next one. Another important part of the cricket, the best batter of the tournament, which is goes to the man who got the highest run in the tournament. Any guess? Absolutely, you're right. The man who scored 83 runs in 82 deliveries, Dikshit of Mohan Thunder. Demadi Dikshit avaru ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮೋಹನ್ ಟಂಡರ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 83 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ one of the best batter of the tournament, which is Dikshit, will going to receive the orange cap from our chief guest. So firework begins here, and he will going to receive the best batter award from our chief guest. Dilraj Halwa, the presenting this the best batter award for Dikshit for his fantastic contribution from the bat. Now it's all we can go, definitely we're going to the big one, and the king of all individuals. Yes, before going to the best, the man of the tournament, and it's a time to have a one special prize, best catch of the tournament. Any guess? The best catch of the tournament? Absolutely. ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ MLA ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ. So one and only, yes, Ravi Salian Padayuru, the best catcher of the tournament, again he is from Mohan Thunders. Ravi Salian ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು, best catch of the tournament. ದಾನ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ದಿನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತದಿತ್ತಾರೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಒಂತಿಯರು ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಕ್ಕನ್ನು. Yes, Ravi will going to receive the best catcher of the tournament. And congratulations, Ravi, for your wonderful contribution for the success of your team for Mohan Thunders. Now it's a time, the dream of each and every player, because the dream of the man of the series and you tunagane kushi apundu. Illade ponaga epala illadakku nerpini and ee sarti illade pona nerpu jer basi bade kushi to receive one pedapanda. ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೊಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲೇರೆ the man of the series of this KPL, which is goes to ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಏತ್ ಪುದರ್ ಬನ್ ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ man of the series ಪಂಡ ಐಟ್ contribution from the bat and the ball ಅಪಕಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು. Yes, so once again please welcome Mr. Mitesh with the 14 wickets and 24 runs and 6 catches. Today at 8th Barpun Banda, all-round performance here from Mitesh. Just like I'm always mentioning, don't judge the book by its cover. Chota Pack Bada Dhamaka. The fridge will go into presented at the company. The fridge korandule higher the refrigerator which is presented for Mitesh. Mitesh Banandullere fridge ಏನರ್ದು
ಉದ್ದುಂಡ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪಾದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅಂದು So Mitesh will go to receive the representative. Big hand for Mitesh. Outstanding performance in this tournament. From the bat, from the ball, and even in the field. And is much deserved the man of the series of prestigious Kadri Premier League 2026 Season 11. ಮಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿದೆ ಬಂಡ ಈತ ಜನ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇರೆ ಎನ್ನದಿತ್ತರ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ವಿನ್ ಅಪ್ ಅನಿರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಫ್ರಿಜ್ ದೀತಿರ್ ಬಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡೆ ಒಂಜೆಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಇತ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಇತ ಎಲ್ಜನ್ ದಾದ ಅನ್ಪರಂದಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಜೆ ಫ್ರಿಜ್ ದಾದ ಅನ್ಪರಿಗೆ ದೀಪು ನಂಚೇನೆ. Yes, Red Adupade. So, congratulations, Mitesh. Wonderful performance. All the best. ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬುನೇಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗೊಬ್ಬುನೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಏಪ ಈ ಬೇಗ ಪೋ ಬಂದ್ಪೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಇದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಿತೇಶ್ ಐಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ ಕೈತಲುಂತಲೆ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. Yes, congratulations once again for Mitesh for the wonderful performance from the ball, bat, and even in the field. And now it's a time to invite a runner-up of prestigious KPL Season 11. And please welcome all the players of team Mohan Thunders. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೋಹನ್ ಅವರ the proud owner of the Mohan Thunder are stage regular. The very satisfied owner who won the runner-up of this prestigious KPL Season 11. And this boy has done a wonderful job. And I request each and every players to please come to the presentation dais to receive the beautiful trophy, the very attractive trophy, the runner-up trophy of KPL Season 11. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. They will going to receive the runner-up trophy with the check. Congratulations, the Mohan Thunder. Yes, ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. Runner-up of KPL Mohan Thunders are the runner of the prestigious Kadri Premier League Season 11 2026. Thank you. Celebration begins here for the Mohan Thunders. They are the runner-up of 11th edition of KPL 2026. Congratulations. Here you go, the players of Mohan Thunders. They played like a champion here and they become the runner of the prestigious KPL. The firework begins here.
Now it's a time to invite the champion. Of course, ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಲಕತ್ವಡು ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಂಟ್ರೈರ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೆ ಆಕ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಡ್. Yes, it's a big hand for the Alwas Super Kings. He came, he saw, he conquered. One of the greatest slogan. And is this as absolutely Alwa, the Super Kings, all the players kindly request you to please come forward and receive the beautiful trophy, the Champions Trophy of Kadri Premier League 2026 Season 11. I request all the chief guests in our main stage to kindly request you to present the check and at the same time hello check. So congratulations for the hello check. Yes, celebration begins here. Alwas Super Kings are the champion of the prestigious Qatari Premier League 2026 Season 11. Congratulations. The time for the photo session. Yes, we are going to conclude the post-match presentation ceremony. And we are once again would like to give special thanks to each and everyone for your wonderful support to make this 2 days of cricket tournament under day and under light. And it's been a fantastic tournament, very successful cricket tournament. Once again, I would like to give yes the time for the photo session. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾಗಾರರಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ for the wonderful opportunity being the part of this prestigious cricket tournament. As a commentator myself, Satish Salian and Mr. Gopi and all the officials would like to give special thanks to the organizing committee. Thank you. That's all from the presentation ceremony. Thank you. The bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.